Hello, 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 hello. Hello, 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 hello.
ठीक है बोलिए, अब बोलिए, यहाँ पे नहीं करते, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, एक मिनट रुको। हेलो, हेलो चेक, हेलो, हेलो 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 हेलो, आ रहा है ना? चलो हो गया, ठीक है। हम्म। अभी यहीं से मैं म्यूट किया है, अभी यहीं से म्यूट किया है, वहाँ से मत करिए।
Welcome to the 10th Symposium of Development Management Institute, Patna. Please be seated and keep your mobile phones off. We are going to begin the symposium soon. I request everyone to please be seated and keep your mobile phones in silent mode.
I welcome everyone to the 10th Foundation Day of DMI Patna. I request everyone to please be seated and keep your mobile phones in silent mode. Good morning, ladies and gentlemen, the Director DMI, distinguished guests, and renowned experts, principals and faculties of various academic institutions and universities, participants from government and non government organizations, invited members of the press, faculty, alumni, and students of DMI, managers, staff, and all the cherished members of DMI fraternity. A warm welcome to you all on this 10th Foundation Day Symposium of Development Management Institute on Development Management, Innovation, Sustainability, and Challenges. I am Prerna, and it is with great pleasure and enthusiasm that I stand before you today to introduce myself as the host of this proud moment. Today, it gives me immense pleasure to extend a warm welcome to each and every one of you as we are here to commemorate a significant milestone in the journey of our esteemed institution, Development Management Institute. We have gone from strength to strength academically since our launch, and we are known for our work in research and consultancy, management education for sustainable futures, and competency enhancement programs for career professionals to empower grassroots by augmenting development leadership. Once again, I welcome our esteemed dignitaries to the 10th Foundation Day of DMI on theme Development Management, Innovation, Sustainability and Challenges. Welcome, ma'am and sir. And now I would request our dignitaries, our special guest, Dr. D.R. Singh, Vice Chancellor, Bihar Agriculture University, Sabor, and our chief guest, Dr. Swati Nayak, 2023 Borlaug Field Award winner, IRRI, to join us for the lighting of the lamp and mark the start of the celebration by inaugurating the event. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I request you to please be seated. Now, as we navigate further, on this proud occasion of Foundation Day, I have the honor to request our esteemed Director DMI, Professor Devi Prasad Mishra, to deliver the welcome address. Sir, we would be honored to hear your celebratory and complimentary welcome. Thank you and good morning. Our special guest and chair of the session, Dr. D.R. Singh, Honorable Vice Chancellor, Bihar Agriculture University, Sabur, Foundation Day speaker and chief guest, Dr. Swati Nayak, International Rice Research Institute South Asia lead in seed system and product management, and proud recipient of Borlo Field Award 2023, invited guests, student participants, and my colleagues from the DMI, invited members of the press, ladies and gentlemen. I welcome you to the opening session of the 10th Foundation Day Symposium.
DMI turns 10 today. It's our birthday. The first decade has been eventful and exciting. From being just an idea mooted in 2013 to its founding in February 2014, DMI has traveled these years with a steadfast commitment to its foundational mission of being of value to the knowledge systems and practice of development management. Empowering at the grassroots has been the abiding guiding principle in all our endeavors. It is befitting, therefore, that we have a young scientist, young science practitioner, who has been honored for her work at the cutting edge of science and practice, of being close to the ground, listening to the needs and requirements, and translating them to product ideas that have spurred the research community at IRRI and elsewhere to deliver products of value to the small and marginal farmers. Dr. Naik's work would earn the indulgent approval of doyens of the field of marketing. It exemplifies one of the famous definitions of marketing that says marketing is all that you do to make selling superfluous. The value of the customer is built in. The value to the customer is built in through a process of co-production, and therefore no sales push is there required afterwards. We are indeed privileged to have you, Dr. Naik, amidst us on this very special day. We also feel privileged by the august presence of the Honorable Vice Chancellor for this special session. As we complete the first decade, 10 years is a relatively long time in an individual's life, but a short one for an institution. We need to be careful on two fronts. In most institutions in India, exhibit a very short half-life. From the nuclear science point of view, you would understand half-life, beyond which there is a permanent decay that sets in. And institutions do suffer from very short half-life. Some people have estimated that roughly about anything between 15 to 25 years is the period when most institutions that begin with a lot of promise reach their half-life, and then thereafter they what in institutional theory are called, they become permanently failing institutions. They exist because they cannot die, but they're unable to regenerate and recreate the magic with which they were created at the beginning. We will have to be extremely careful to introduce regenerative processes within the institution so that we don't hit that half-life too early and too soon. In the first decade, we have had some successes, many failures, and there is much to learn from them. Today we are in the midst of serious introspection, interrogating the path we have traversed, the positives we have gained, and the failures we have encountered. The governing board mandated strategic review and planning is presently a work in progress. If we look at the environment and are seeking to make sense of the continuities from the last decade and the breaks and the changes that are taking place, public policy push in the direction of digital mapping of crops and the cropping patterns, the unmistakable movement towards greater marketization of agriculture, the changing demographics and its effects on rural livelihoods, the big push for transition from subsistence livelihoods to market-oriented, enterprise-based livelihoods, the persistence of some social patterns, the curious case of too much of government and too little state, among others, are being taken into reckoning. The black swan among all that we see, and the one that adds urgency and cries out for appropriate response, is the transition from global warming to global boiling.
That this demands us to rethink infrastructure resilience, diversification of economic strategies, healthcare adaptation, education and awareness building, among others. Our commitment to the small and marginal or the vulnerable insists on the inclusion of these concerns in our scholarly and programmatic pursuits. In the decade ahead, we will add to our academic resources and expand on the academic repertoire. We will have to harness our research potential to serve our educational programs. We will have to be entrepreneurial, enterprising in all our endeavors. The challenges around permit us no comfort. Business as usual is not a choice. We must rise to the occasion and pursue all potential paths to redeem our foundational faith and intent. This symposium is not just an event, but a significant point, probably an inflection point in the institutional transition we are pursuing. Guided by the directions given in the new education policy 2020, we shall deliberately move to retain and guard our institutional autonomy, an autonomy that allows our intellectual agency to have its best expression in the larger public interest. Institutional autonomy is not a luxury, it is a necessity. We are delighted by the presence of two eminent scientists to inaugurate the symposium today. The work and contributions of Dr. Nayak holds a number of lessons for us as a management school wholesomely devoted to the lives and livelihoods of the small and marginal. Her talk will help us develop a perspective and offer pointers for our future engagements. Our sincere gratitudes to Dr. Naik and Dr. Singh for their august presence. Many thanks to the guests and members of the press. A warm welcome and a cold morning once again. Thank you. Thank you so much, sir, for these kind words of yours. Now, we are privileged to introduce our distinguished special guest, Dr. D.R. Singh. Dr. D.R. Singh is the Vice Chancellor of Bihar Agricultural University, Sabor, for the past 1 year. He has been a very long and illustrious career in the academic field. He has the experience of working on the mainland, island, and hills of India. Earlier, he was the Vice Chancellor of Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur, for 3 years, when the university got NAC accreditation, the first agriculture university to do so in the country. During this period, he was also holding charge as Vice Chancellors of two other universities, one in Kanpur and Meerut. Prior to this, he was the director ICAR of the National Research Center of Orchids in Sikkim, when he played a key role in and had released 3 new varieties of orchids from the center. Before this, he served at Port Blair as the head of the Central Island Agriculture Research Institute. He commenced his career in the Andhra Pradesh Agriculture University when he worked on 19 varieties of horticulture crops. Dr. D.R. Singh has received 27 awards at international and national level for his work in academia. He has, to his credits, 239 research papers, 27 books, 49 bulletins, and 9 policy papers. His work has been appreciated by our former president, Dr. APJ Kalam, for his work on noni, a medical plant, by releasing his book on this plant. We take pride in presenting our special guest with a shawl. I request our director, sir, to do the honors.
Now we welcome you, sir, to address the participants on this occasion of 10th Foundation Day Symposium of DMI. Well, very good morning to all of you. The respected chief guest of this program and a very eminent scientist, Dr. Sujata Nayak, scientist from the Erie, Philippines, Director DMI, scientists, delegates, participants from these organizations, and also the guests from the other organizations and other staff of these prestigious institutes, media personnel, ladies and gentlemen. I am truly honored to stand before you on this collective gathering of brilliant minds in this momentous occasion of the 10th Foundation Day of Development Management Institute of Patna. I appreciate the presence of people from different sectors, the academia, the NGOs, industries, maybe some of the farmers representative and other organizations. This symposium presents an excellent platform for intensive discussions around science, innovation, and opportunities in agriculture in the current climate change scenario. I recognized the wealth of knowledge and expertise present here today, and I am eager to contribute to the collective dialogues that defines this symposium. But first, let me extend a warm welcome to Dr. Swati Nayak, who is the chief guest of this Foundation Day, as well as the guest speaker, who is also known as the Seed Lady, Bihana Didi. She has been awarded the renowned Norman E. Borlaug Award for field research and application for the innovative approach to integrating smallholder farmers in demand-driven rice seed systems, including testing and development, as well as equitable access and adoption of nutritious and climate-resilient rice varieties. Her different strategy, partnership, and unique positioning model to establish the drought-tolerant varieties that is called Sabagi Dhan in rain-fed areas of Orissa was highly commendable. Her endeavors also resulted in the successful dissemination and cultivation of more than 20 climate resilient varieties through innovative seed systems and scaling channels across multiple countries. She played a pivotal role in crafting the international seed policy known as Seed Without Borders, which has strengthened the distribution of contemporary rice cultivars throughout South and Southeast Asia. Dr. Nayak's contribution in prioritizing and empowering the women in agriculture are admirable. She meticulously involved women in evaluating and collecting feedback on the new rice varieties and in the process trained them in varietal selection, seed production, and helped to establish numerous women-led seed enterprises. She also laid the groundwork for the national program led by Government of India to benefit millions of women farmers. Her efforts not only led to increase in productivity, but also increase in income, decision-making authority, and overall empowerment of the farm women.
Presence of such prominent figures adds a significant dimensions to our discussions, and we are eager to benefit from the extensive knowledge. So let us extend a hearty round of applause to Dr. Nayak. Your unique insights will be the inevitable to this symposium and to the state of Bihar. I also take this opportunity to extend my invitation to visit the Bihar Agricultural City sometimes as you find times. Well, on this occasion of the Foundation Day of Development Management Institute, Patna, that marks a decade of relentless pursuit of knowledge, innovation, and leadership in the realm of management education. To commemorate this milestone, I would like to take a moment to recollect the memories reflecting the incredible journey that each one of you as students has embarked upon within the walls of these esteemed institutions. Your commitment to education and the pursuit of knowledge is truly will shape a future generation of dynamic and visionary leaders. I hope your days at DMI was not just about acquiring a degree, but a transformative journey, embracing every challenge, every late night study sessions, and every group projects as a stepping stone towards your personal and professional growth. I hope the obstacles you faced taught you to learn, adapt, grow, and build resilience. Your peers, your professor, and the broader network you build here can be instrumental in your future endeavors. As future leaders, you have the power to make a meaningful impact, whether it's in a business, community service, or any other field. Strive to contribute positively to the world around you. Your actions matter. Collaborate, connect, and nurture relationships that will support your journey. I feel it is an opportunity and absolute privilege to share the dais with a very young and energetic scientist, Dr. Swati Nayak. Many of you might not be knowing how much the association we have and BU has with the Dr. Nayak. This is a really a very proud moment of the Bihar Agricultural City, Sabor, and also to share that Swati is associated of our university since 2020, I mean 2020, on a number of assignments. Her major work was concentrated on delivering genetic grains in farmers' field, cereal seed system, especially rice seed system in Bihar. During Kharif 2020 season, a total of 119 head-to-head trials with 7 rice varieties and cafeteria trial with 20 rice varieties conducted in the 3 Krishi Vigyan Kendras, that is in Rohtas, Araval, and Baka, under BAU's jurisdiction through ERI and BAU. Collaborative programs led by Dr. Nayak during Kharif 2021, 95 on-farm trials, 6 cluster demonstrations, 13 dealer demonstrations, and 1 cafeteria trial with rice varieties conducted in KBK, Patna, Jahanabad, and Baka under the project. And during the Kharif 2022, 55 OFTs, 4 cluster demonstrations conducted in KBK's Rohtas, Patna, Jahanabad, and Baka. And also in 2023, 15 OFTs, 4 cluster demonstration, 14 head-to-head trial, and 3 cafeteria trial conducted with rice varieties
in different districts, Rohtas, Jahanabad, and Baka. So these data signifies the degree of association of Dr. Nayak with the Bihar Agricultural University we have. And country and the globe. And Dr. Nayak has contributed a lot to the rice varieties, not only at her center, but also in the Bihar, as I indicated all of you. The Bihar Agricultural Institute, in a close association with the Bihar government, we have initiated so many programs to mitigate the climate changes. So, several programs, like you can say, the SMART program, the water smart, the nutrient smart, the carbon smart, energy smart, and weather smart, and also the knowledge smart. So many programs running on, and so if you the other programs like the climate resilient farming, we have initiated with the marginal farmers. As you all know, the Bihar state has the small and marginal farmers. 84% of the farmers of the state are the small and marginal farmers. So they are the more vulnerable to climate change. And in terms of both the crop yield as well as the financial yield. So Bihar is the first state in the country to start with the climate resilient agriculture program, and almost all districts, and all the three universities, the Bihar Agricultural University, the Sabor, and the Animal Science University in the Patna, and also the Rajendra Prasad Agricultural University, Pusa. See, all closely we are running the different programs, and its impact see, is also coming up like anything. So, likewise, the several digital innovation to the farmers initiated by the government, and we are participating in that programs. Like, and also we are regularly monitoring the carbon footprint, and that is very important. As we say, you have to be the smart in carbon footprinting. Several initiatives at the university level we have initiated. So to mention few, like we have mapping of green cover area in the main campus as well as the all our entire units. As you know, and therefore our duties for the responsibilities for the entire states. So we have 10 colleges, we have 14 research stations, and we have 22 Krishi Vigyan Kendras spread over across the country. So to mitigate this climate change, we have a lot of programs, as I mentioned, for this carbon footprint. Like for the very first time, our university has got the Green University with a platinum ranking, as well as we also obtained the certificate environmental and energy audit certificate. This is the first time in the country that Bihar Agricultural University has got this award. So several other programs which we have initiated at the university level through the Krishi Vigyan Kendra, through the different colleges, units, and research stations, these have been awarded at national level. The year 2023, we received 13 national awards, not the state award. We received 13 national awards. Of this, even for the popularization of the programs, say for example, we have introduced a film, a water for tomorrow. So how to conserve the water for the future? We got the national award. And the biodiversity conservation, we obtained 2 Genome CBR award, one for the Katarni rice and other for the Sahani lychee, which have already obtained the GI. But recently, uh, uh, we have made a one film, Parali Upar, and we got the first prize at the country level with 1 lakh rupees as well as the citation. So several, something like the use of crop residues and the biofertilizer unit, the installation of the solar panels, the flower processing unit. You know, in Bihar, till date,
we receive the flowers from the Bengal, Calcutta. Whereas our land is very fertile. And we have the unique festival, that is Chhat Puja. That is a worldwide attention it brought. But there is no concept of flower growing here. So we have initiated awareness, so many programs. Now from this year, they have started. And one program, we go to the temple, we offer the flowers to God, and the flower goes waste. We have initiated a program, God to God. We collect the flowers from the temple and to the laboratory processing unit, and again we make the powder and the agarbatti. Then again we give it to the God. So like this, several programs we initiated, and also the empowering farm movement. Several programs we initiated. I will not take much time because we have the guest speaker. We like to listen her. So, but I'm just telling. So many of you don't know about the BAU Sabha. So you all can visit. We would like to have a very close association with the DMI as well as all the already we have the with the ERI. So take a look and visit us and also suggest us, because we also need the management institutions to come over there and have a close banding. So, as time given, I will not go through, but still I am very thankful to the, especially the director of the DMI, for giving me the opportunity to be with us, with you, to interact. Once again, I thank to Dr. Swati Nayak. Uh, 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 I think she has accepted our invitation also to visit BAU. And with this, I really, I'm very glad and rather thankful to the director for inviting such a eminent scientist in the not in the agricultural institutions, but the management institutions. So I think you are the pioneer to take a chance of having her presence and the as a speaker. So with this, I thank you all. Thank you very much. Thank you, sir, for this insightful address. Now, the much awaited moment of the day, felicitation and address by our chief guest, Dr. Swati Nayak. But before that, Dr. Swati Nayak has been named the 2023 Norman E. Borlaug Award winner for Field Research and Application recipient. Endowed by the Rockefeller Foundation, the Borlaug Field Award, named in honor of the renowned agricultural scientist and Nobel laureate Dr. Norman Borlaug, is presented annually to individuals under the age of 40 whose pioneering and exceptional science based work has significantly advanced the world's food production and helped alleviate hunger and malnutrition. Currently, scientists and food production, sorry, currently scientists and South Asia lead for seed system and product management at the International Rice Research Institute, IRRI, Dr. Nayak is recognized for an innovative approach to engaging smallholder farmers in demand-driven rice seed systems, from testing and deployment of equitable access and adoption of climate resilient and nutritious rice varieties. Dr. Nayak has been serving as the lead for the Cereal Seed System Group under the key initiative Seed Equal of CGIAR. Nayak's illustrious career, spanning over 13 years, has been characterized by following outstanding contribution, unwavering perseverance, and a profound commitment in bridging the gap between scientific knowledge and practical applications. Dr. Nayak revolutionized how farmers access and adopt new rice varieties. She built a system where farmers actively participate in identifying their needs, testing new varieties in their fields, and ultimately choosing the best ones for their specific conditions. This farmer centric approach led to higher adoption rates of climate resilient and nutritious rice varieties, improving food security and income for smallholder farmers across Asia and Africa.
Dr. Nayak goes beyond just providing seeds. She actively engages with farmers through training programs, field demonstrations, and farmer to farmer knowledge sharing, building their capacity to experiment, innovate, and manage their resources efficiently. This empowerment helps farmers adapt to changing environments and become more independent decision makers. Dr. Nayak recognized the increasing challenges of climate change for farmers, working with thousands of smallholder farmers across diverse ecosystems in different countries across Asia and Africa. Dr. Nayak has organized more than 10,000 on-farm and comparative testing and participatory evaluations for more than 500 rice varieties and disseminated more than 220 critical path-breaking varieties that are climate resilient, high yielding, biofortified, and healthier through seed systems and scaling channels. Her work on Sadabhagi Dhan, a drought-tolerant rice variety in Orissa, exemplifies her commitment to developing solutions for vulnerable communities. Dr. Nayak has also advocated for gender inclusion in agricultural research, actively engaging in participatory research. She actively engages with and trains women farmers, recognizing their crucial role in food production and household decision making. Her efforts also extend to promoting women led seed enterprises, creating income opportunity for further strengthening their role in the agricultural system. Dr. Nayak also spurred in nurturing regional collaboration through Seed Without Borders policy agreement, which speeds the dissemination of modern rice varieties across South and Southeast Asia. Her instrumental involvement in introducing promising novel rice varieties from Bangladesh to India and beyond has transcended geographical boundaries, ensuring that research innovation swiftly reach the hands of farmers across nationalities. Academically, Dr. Nair received a PhD in competitive intelligence and strategic management for agricultural extension management strategy at Amity University, a master in rural management at the Institute of Rural Management Anand, and a bachelor of science in agriculture at Acharya N.G. Ranga Agricultural University. We are incredibly we are incredibly proud to felicitate our chief guest at such a momentous time in the journey of Development Management Institute. We commemorate this day by felicitating her. I request our special guest to present the chief guest with Angabastram and a souvenir by Professor Surya Bhusan, organizing committee chair. Thank you, sir. Today, we take pride in honoring your contribution to the field of agriculture, ma'am. At a very young age, your achievements resonate with today's development management, innovation, sustainability, and challenges topic. We welcome you to address our participants. A very good morning to everyone. It's really overwhelming. And trust me, uh, the picture which I will get today,
This picture, I am sitting between Dr. Misra and Dr. Singh. It's basically the whole story of my training, my value system, which led to receiving this coveted and prestigious award last year. Relating, studying agriculture science, and then trained in rural management, I could draw or I could create a beautiful symphony of how we bring in the applications through science and ensuring that our scientific innovation, greatest scientific innovations are also getting integrated with greatest innovations of scaling and rural innovation modeling to ensure that our technology is reaching to those for whom we are developing it. That is the whole essence of story, which probably I tried to understand while I joined in CGIR or International Rice Research Institute. And my ultimate goal was that all that greatest innovations, be it any technology in climate resilient space, be it quality seed, improved germplasm, that our scientists are developing, eventually I have this responsibility to ensure that those are reaching to the smallholder farmers who are the most vulnerable stakeholders to the climate change or the scenario which we're talking about. So the entire innovations in terms of execution of different rural innovation models, livelihood models, enterprise, or bringing in policy innovations basically were towards bridging that knowledge gap, bridging that information gap, and bridging that technology access gap. So having said that, um, esteemed guests, I have been asked about to speak about climate resilient agriculture. I have a slide, but that is a bit too technical, or maybe in more of a agriculture science language. But I would like to make it, how essentially it is application based while going through it. Please, who is operating it? Okay, I mean, how do I have a pointer or something? I can. Thank you so much. Where should I? I'll just indicate. Okay, so we all agree to this fact that climate change is real, and there may be some, yeah, so you can just skip till the last slide is there. I mean, just put it, there are animation, oh, I mean, go back. Yeah, so there are animations. So what I am saying that skip animation. So just go quickly, please. The first one only, like after the title one. Yeah, yeah, perfect. Yeah. Or maybe you can just put it like this instead of slides. So that would be better. It will save time. Yeah, okay. Go back. Yeah, perfect. So yeah, so it's not like we all are aware about that climate change is a real threat to all of us, and the generation, the younger generation who is facing the heat are the one who need to deal and innovate how to deal with this. So in this strategic war towards climate change, agriculture sector has a lot of role to play, but not the standalone sector or who contributed to this. However, doing our bits,
two broader aspects which we all have to strategize technically, that is climate adaptation technology and strategies and climate mitigation part. When I talk about climate adaptation, it is basically tools, methods and approaches which is for immediate reduction of the vulnerability of the the smallholder or the people who are facing the heat of climate change. Like suppose I am a farmer, I am facing recurrent flood, drought, salinity or many implications of climate change. What I do immediately to ensure that my food security is safeguarded, my livelihood is safeguarded. And when I talk about mitigation, that how we create models and approaches which in long term actually basically preserves, or the conserves our natural resources or our, um, reduce down our carbon footprints, and how that in a long run create a better future for us. So both the strategies need to be coexist, one immediate and one long term, but we need to work towards it through our scientific innovations or technological innovations. This is what I have said. So, some of the mitigation options which we have been exploring and uh, trying to scale in the rice spaces, rice science or agriculture, rice farming practices are there is around how do we reduce the methane emission from the crops like rice. Look, rice is something which is a staple for billions in Asia and especially for the smallholders. And there remains a complex nexus of poverty and rice growing belts. Food is something which is sociocultural. You cannot change it, or we should not also intervene to tell people what to eat and what not to eat. And in this whole fabric, we also know that rice is a crop which consumes a lot of water and is considered as villain for more methane emission. But if we can target this crop and invest in innovation in these crops, because it also captures the maximum market share or footprint in terms of the farmers, number of households growing this particular crop, then the amount of impact in reducing carbon footprint would be also quantified as high. So this simple calculation make us think that we should invest in mitigation strategy in rice farming, and some of the technology which we are talking more upfront is going back in the direct seeded rice. So direct seeded rice is something which used to probably exist in our civilization in as an age old practice. If you still go to many belts of Odisha, Chhattisgarh, you see broadcasting, beusening are some of the practices in direct, still existing in some many smallholder belts. But with the advent of grain revolution, with high yielding varieties, with lot of modern cultural practices, transplanting started becoming a mainstay. But now we are going back in the time lane to reflect that we understand this is something which we need to do. And there remains a lot of challenges, of course, and we need to explore more and more on how do we customize these practices in direct seeded rice, how we bring in different robust weed management strategies, and most importantly, if you look at direct seeded agronomy in terms of mechanization or package of practices probably existing for us over a decade, and we are trying to customize as per different locations, so that we save energy, we save labor, we save water. So the overall we reduce the carbon footprint and cost structures also. But at the same time, think about the varieties which have been used, the high yielding varieties currently which we have been using since the advent of green revolution in 1960s. Those were never basically bred or developed for direct seeded conditions. Those were always tested in natural system or in farmer field under the transplanted ecosystem. Therefore, some of the traits which are necessary to reflect when you grow a direct seeded rice are not present in those. Maybe some matter of chance, but not with all of them scientifically. Therefore, breeding for direct seeded rice is something which has become one of the latest innovations in last couple of years, where we need to develop those varieties which have those particular traits to survive and flourish under the direct seeded conditions.
also equally give competitive yield compared to the transplanting rice. Similarly, other method of practices and, alternative wetting and drying method, soil management, those kind of things are more towards the natural resource conservation for us and seen as a long-term mitigation strategy in agriculture. Next. So these are some of the tools which we also have been developing to quantify some of the mitigation factors, because one of the challenges is that even though we say as a technology it is very good, it reduces the carbon footprint and etc., but our tools and methodologies so far to count or quantify those carbon reduction and etc. is probably still needs a lot of appropriation and still needs lots of customization. And if in an era we are talking about carbon credit, that entire transparency in terms of approaches, methods, how do we ensure the end users or the adapter farmer is getting the benefits of that carbon credit, in terms of suitable policies, suitable tools and methods to count those in monetary transactions. So those are some of the things which is still very nascent for our country, and we need to explore and we must explore going further if we are expanding these kind of approaches in our mainstream agriculture technology dissemination programs. Next, please. And some of the adaptation strategy. Now we see that adaptation is something which can immediately reduce the vulnerability for the smallholder farmers. Something which I work closely is around climate resilient rice varieties, for which I will be giving more narrowed down case of seed system. So here what we are talking about is, different climate resilient varieties. In this picture you can see that how high is the survival rate of different flood tolerant, drought tolerant rice varieties which were grown in different head to head comparative trials. When we say head to head, it means it is like, side by side aligned strip trials which exactly compares the varieties without any variation in management practices and also under farmer management practices. So we are not optimizing with inputs, fertilizers and etc. To get an optimal yield, but in a more realistic context we are comparing the genetics, basically the variety, to see that what is giving better yield under stress conditions. So we have a large number of evidence that how climate resilient varieties can act as in-kind insurance to poor farmers, and that should be the mainstream in our breeding approaches or in our seed system program. So this is one of the most powerful adaptation strategies. So I spoke about DSR already, so nothing much to add into it. Yeah. So when I gave you an example of the picture of climate resilient varieties, so similarly now these are like the existing climate resilient varieties which are getting added more and more, like flood tolerant, the sub-1 varieties which you will find in different eastern India pockets, the varieties with salinity tolerant, the variety with drought tolerant, the Sehwagi Dhan story which we spoke about. Now there are several, 10 years ago probably one or two varieties or option were there, but now there are several drought resistant varieties are there. And then we are talking about DSR breeding program where we will be bringing in direct seeded rice fit varieties. So now let us look at what is the varietal dissemination or scaling scenario in India. In rice alone, not other crops, in rice alone, we have estimated that around 1500 modern varieties have been released since the program took off from 1960s and 70s through various national institutions, different ICR centers, different universities, and of course the CGIS centers like ERI and etc. had a very close collaboration with national systems. We share germplasms for testing and release, though the release and branding happens through the national agencies. But together we all have developed around say 1500 improved rice varieties. But when you go to every year's demand indenting data that is reflected in seednet portal of government of India, you will not find more than 350 varieties
probably 80 will have respectable indenting, maybe like more than 1 quintal or so. Rest of will have a small chunk of market share. And then you will go further to calculate like which are the major players. Maybe 10 varieties will be capturing say 60 to 70% of the market share. Now, if this is the scenario, where comes the return on investment in this science domain? We have been investing significantly in genetic and breeding research to develop a lot of varieties, but the scenario, the simple figures also indicate that this is not reaching to the farmers. This question is puzzling, and this is something which is always documented as a priority in our agriculture policy documents, that we ensure that varietal replacement is faster and seed replacement is faster, because as per our science we should not encourage older HYVs to be grown. Like if we are seeing 40 years, 30 years, 20 years of old products still grown by the farmers, what is the point of then breeding if the new varieties are not reaching to the farmers? Now the thing is that not that the varieties which are being bred are not good enough. It's not the fact. The fact is that many often the information awareness about those varieties is not reaching in time to the farmers, and the early momentum which we need to stabilize a variety in the supply chain. Because suppose if I'm an extension stakeholder, I go and do a demonstration with the farmer, next season I will exit. But the farmer and the community, they will look for the seeds of that. And the seeds are not sold by the dealer. The seeds are not available in the seed chain or the supplier network yet. Then in that initial period, they lose momentum. Then probably another competitive product or released variety is coming. So we lose a lot of momentum. So a lot of varieties get shelved in the entire process, and they may be really good and they don't know, and we don't have to reinvent the wheel altogether, but we end up doing all those things. The policy agreement, the seeds without the border, which was highlighted a couple of times in my introductory speech by previous speakers. You know what, why we brought that policy? Because we noticed that like similar ecologies, a lot of South Asian countries like India, Nepal, Bangladesh, and even Asian countries like Philippines, Thailand, they share a lot of similar rice growing ecologies and etc. Now a breeding program takes 8 to 10 years to develop and register a variety. So imagine the kind of resources and investment it must be going in the entire process in the natural system. But we may already have a product which we are looking for in India sitting somewhere in Bangladesh national system, or vice versa. So why can't we breach this barrier of science, and why we do such kind of duplication and wait for getting a miracle product to arrive? So this search it actually led to creation of this regional cooperation policy, where we can now exchange without waiting to multiple years of testing and trials and development altogether. So the science can have a quicker reach to the farmers, or the faster reach to the farmers, and that is the noble concept which brought in. I will give one example of last year. We were trying to bring in some nutritious biofortified hygiene, or any kind of nutritious rice variety, because we want to mainstream it as a nutritious food in with the smallholder farmers and the consumers. And I remember a conversation from my colleagues from Harvest Plus IFRI, International Food Policy Research. They have a project called Harvest Plus, where they're exclusively dedicated around nutrition and biofortified rice scaling and etc. And they were like, Swati, we're struggling to find a rice variety which is competitive enough in the biofortified space. Can you help us through this policy? And this was exactly the case that we all were struggling, that we got a lot of biofortified varieties released, but when we are putting up in farmers field demonstration, there was yield trade-off. When we talked back with the geneticists, they said yes, it is true, most of the time there is a negative correlation between the micronutrient content and the yield. So a farmer doesn't see the intangible things. If we talk like it has high protein, high zinc and etc., for him or her, the number of bags of produce probably has more tangible value, and if he is losing many few bags in terms of yield trade-off, we may not be able to change his or her perception. So it was very difficult to tough until and unless we have a policy
or in terms of some cushioning from the policy side, like buyback guarantee, subsidized by buyback, etc. Like for example, Chhattisgarh has done really great in that terms of they have promoted by fortified rice by mainstreaming it its PDS system, compulsory buyback, MSPs, and etc. So farmers have grown it, but not everyone will do if we leave it to the open market. So how do we get a competitive product? Then we did due diligence, and we found that the breeders in Bangladesh have really developed some of the good products. So why don't we bring it quickly? So we leveraged these policies, spoke to both the ministries, established in practice the regional cooperation, and got it released in India. And now it is being mainstreamed in many Eastern Indian, UP, Odisha, and in many states actually. It is released for Eastern India. So, so this is what the whole essence is. So the whole concept over here we try to understand in last 4 to 5 years, when in ERI we basically transformed our breeding approaches and seed system program. We thought that it is high time we don't think a germplasm or variety or seed just as an agriculture input. The basic science in our books what teaches, seed is the foundation critical input, it's truth, but we need to think beyond that. It is also a product which will be affected by a lot of market factors, parameters, be it policies, regulatory domain, be it the stakeholders like dealers, miller, their perceptions as well. A farmer may see the yield as one of the primary factor, but the miller will see the milling quality, how much husk recovery percentage he is having when he mill. He will look after his profit, he will think about the grain quality aspect because he is connected to the export market. So if the pull factor is completely missing over there, so how do you create that demand even by breeding a variety which is only production oriented or productivity oriented? So it was essential you bring in the concept of product over here, not just the concept of agriculture input. And that is the whole transformation approach in rice breeding program we started 4 to 5 years back. And we started talking to our national partners to bring in and mainstream as much as possible together, gradually take a step further on this. So when we introduced, our primary starter was start with market segmentation. How did we do? We did a detailed global panel data study to find out which are the key markets for the rice. And we actually grouped all those thousands of varieties and the breeding pipelines and streams in those market segments. So some critical non-negotiable parameters define those market segments in terms of nomenclature, but then there are several of the traits were also incorporated. For example, if I say one of my critical market segment is coded as DEMSI, that means direct seeded establishment method. E means early maturing varieties, maybe within 120 125 days of harvesting from seed to seed. Then MS means medium slender grain. So grain type, establishment methods, maturity duration, and ecosystem, whether for irrigated, whether for rain fed, whether for upland ecology. So these 5 critical non-negotiable traits were grouped together as market segments to find out which are the priority, how much share of the market is captured by segment X, Y, Z, etc. So we kind of saw at a broader level, at a global level, identified something around 24 priority market segments. And then we thought that we could calculate the economic value or the footprint of this market if we invest. So there was a calculation even for us to assess ourselves that what is the return on investment on our varietal development and dissemination program. There was a calculation upfront for the investors also, that how much economic value we are gaining by investing in this pipeline or that pipeline and etc. And the whole product concept or design of a new variety were introduced based on these market segments. So the breeders had a design or a blueprint depending upon assigned market segments. So that was done at a CGIR level. Then counterpart at national level, we identified, suppose in India
We identify, we will work for next decade, say 7 priority market segments, and we identified 7 nodal breeders from Indian national agriculture systems to lead those 7 market segments. And then counterparts, we are working at a CGI level where we'll do the germplasm sharing testing and everything and etc. So the whole thing started from the pre-breeding stage, that we defined the market segment, we targeted, and then stakeholders like us, like the seed systems team and the extension stakeholders also came and aligned with those particular market segments. So breeders can breed, but they should not be the one who will be able to evaluate the actual performance of their varieties in large number of farmer field conditions. So this slide indicates that how we started making sure that our breeding research and our extension team are collaborating and integrating closely and talking about same language. So today, Bihar is one of the best example, and the Bihar Agriculture University in KVKs. I am thankful to Dr. Saab and the entire team of KVKs who have really has been the first mover in this approach, who actually ensured who actually stands and talks about the genetic gain in farmer field. The genetic gain word, the terminology, which was extremely breeding or genetic centrist, has been understood in more realistic and practical application by our lot of extension stakeholders. So what we did, in every year we started organizing our annual advancement meeting with every pipeline, market segment, breeding leads, sitting down over there, talking about the progress on the breeding programs, but also our extension stakeholders coming to that forum, analyzing and telling them the result of the on-farm testings they did for their nominations. So every year we take fresh nominations as per their segments which they are leading. May not be only one breeder. Many institutions are working on one segment. So they have a responsibility, being a nodal coordinator, to talk to each of them. And then we get nominations of, say, like, in a particular segment, what are the latest products innovations you have? And then what we do, we sort it, we screen it, we reject many of them, we pull many of them, depend upon different criteria. And then the evaluators are always the extension stakeholders, the KBKs and associated partners, maybe some NGOs, community organizations with whom they want to run a large number of trialing. So based on the research station data, based on the data which is published, as this is a great variety, yield potential is 7 ton per hectare. Whenever you go to ground, whenever you see the realistic condition when a resource poor farmer grows that variety, there is always a variation. There is a significant deviation from the yield potential, and different other occurrences will affect the adoption, not just yield. We have shattering issues, we have lodging issues, we have grain quality issues, we have pest attack issues. So what about those traits? Just simply by saying my variety is going to yield 710 per hectare doesn't work in that manner. Hence, what we did, that we run large number of multi-location on-farm testing designed in a strip trial or a tricot design, which is statistically one of the globally proven, statistically robust design. These KBK stakeholders, these institutions who are neutral of breeding and research programs, they run in a very blindfolded manner large number of nominations every year to find very robust data driven evidence of which product in which segment is showing how much advantage in terms of genetic gain. 5% gain, sorry, we are not in a position to promote your new variety. 10% still may not be, maybe 15 to 20% visible gain in terms of the farmer's check. Probably the farmer's perception can be changed. So a very practical market driven approach is taken to talk about it, and the feedback is collected from this on-farm testings. Yeah. In addition to this, when we are parallelly running, large number of on-farm testings across India, we also start creating the demand generation efforts, which involve a lot of platforms to bring in visibility, budge, the discussion dialogue. So varietal cafeteria is one of the
important participatory tool, who is that picture showed, where a lot of stakeholders come, and then we have randomized blocks for different varieties, and they do participatory ranking. So these are some of the examples of how we tested through these methods, the performance of different climate resilient varieties. And we saw that a lot of these varieties not only doing well in terms of genetic gain, in terms of yield, but also showing significant climate resilience, significant other qualities also to influence farmers to go for the adoption. We also, these are the examples of, many of the products which we try to position. This is the case of the low input responsive variety. So we popularly call it as a green super rice. So these products can grow under a low input condition. We are talking about carbon footprint. Then we can quantify through the large area, and we have seen the things. This shows that, a lot of feedbacks which we got in terms of not only just adoption triggers, not by, in terms of yield, but many have informed us, high recovery percentage, preferred grain quality, size, and etc. So which has actually in all our intervened pockets, when we have gone back and tried to do phone surveys or feedback surveys with the farmers, everywhere we have seen an informal seed sector dissemination and growing of adoption rate more than 60% in most of the locations. Yeah. So now when we know that we have a very good products, and then we want to basically ensure that our scaling innovation efforts are ensuring that varieties are adopted, we must not forget the supply chain side. So demand creation standalone cannot make a product survive in the marketplace until and unless we are aggressively positioning it through the supply chain. So in order to establish that supply chain, we do have in seed system our formal seed system and informal seed system. And whatever you say, traditionally in countries like India, we still have half of the 50% of the varieties are farmer share mode, so that we call farmer managed or informal seed system. But in between these two, there lies a lot of opportunities in terms of semi formal system establishment, where we can actually leverage, institutionalize these farmers into more structured and quality assured seed production mode, be it leveraging the power of FPOs or different collectives that are available in the rural India. There remains a significant opportunity to create this alternate institution. What it does, it fills the gap currently exists, because obviously our formal system is only catering to 40 to 50% of the needs as per the data. So there remains a market. It also decentralized the access, because most of the times the dealership networks and etc. are always located in an urban epicenter, away from many remote areas and villages. But these community institutions are present in many remote areas and villages, and if we make them the epicenter of seed production and seed business and sale, they are decentralizing the production and access, and they are also contributing to the seed demand and the varietal turnover process. So going further on to this, we started to capture these semi-formal institutions, bringing the informal and formal system closer to each other. So hence we started actually building on creating a lot of seed institutions led by the farmers groups. And when we started building and developing them and as seed producing and business enterprises, we notice that most of the time they have access to knowledge and training on the technical aspect, like quality seed production. A lot of agriculture extension officers and institutions are they are by default, and this is a low hanging fruit for them. What they really lack is that business linkage and that knowledge about the regulatory affairs, that how to do the labeling, how to do the quality registration, when to call a certification officer, how to get themselves registered for all those processes, those criticalities. Who are the stockists, who are the dealer network, who are the aggregators whom they can sell, or whether they should sell by their own labeling and packaging. All those key critical information to make them entrepreneurs are completely missing. So we created the pillars of information, and we moved away from the low hanging fruits. Certainly the technical aspect is important, but even if I
develop a very promising technical manual in local language or in pictorial form, that may remain with them to know how to produce a quality seed. But these are more skill based, the negotiation, the talking to different market stakeholders, regulatory bodies, and etc. So we catalyze that behavior in them to build the connections with these kind of people as part of the process of the entire training module. And then when we are talking about and in our program we engage significantly women institutions and women farmers, because if you see, traditionally women are called as the custodians of seed. If you go by the histories of agriculture, how we evolved from a hunter and gatherer society to agrarian society, it is always said it was the women who stayed back at home. They conjured the seeds, they stored the seed, they selected the seeds, while men were going for the hunting and gathering operations. So by tradition, by knowledge, they are also one of the greatest custodians. So why not we leverage their power over there, and then we create these women institutions, and the knowledge products which we designed also were conducive to gender needs or the taking care of the gender lanes, because we also saw the literacy level with the women farmers is quite low, and the technical language or the jargons which we use, different information materials or extension and materials, can be sometimes very confusing for them to retain or have a recall value. So we try to minimize and make it more pictorial and visual knowledge materials in terms of step 1, step 2, step 3. In this calendar, this week you do this step, so that they understand what they do with their crops done to ensure the final quality seed is very good quality and worth of labeling or certifying. So we followed that kind of knowledge equity principle over here when we spoke to we worked with these farmers. Now this is my last slide to sum up. So what, maybe we didn't do many things different, but we did things differently here. The first thing what we did is that we stopped delinking market and society. Often in our approaches, when we talk about inclusive model, when we talk about participation and etc., we forget a lot of market factors. Even if we are working with the smallholder farmers for products like seed, for the varieties of germplasms, these market factors will play. So delinking those thing was probably the mistakes or the approaches. So we started to bridge the gap between these two. We brought in both the concepts to a same platform. We started thinking as seed and germplasm not just as a critical input for smallholder farmers, but a product also. Then we bridged significantly the gap that established gap was glaring at us with the breeding research verticals at different level with the extension research or extension platforms. We brought them together to talk and decide and have also very demarcated responsibilities and etc., and build that trust to each other, sitting on the same forum, talking to each other and relying each other's data and evidence. So that kind of collective effort, and we made it most exemplary way, participatory and inclusive, by talking about equitable and decentralized access of seed, by bringing in also alternative institution in large number to coexist with the formal system of formal institutions. And the partnership and partner capacity building was the prime factor in this whole process, because one or two scientists like me or the team of few could not be, but we have significant power in our national partners and stakeholders, like our tremendous power in the KBK network, especially in India, which we have probably in many countries we don't have. So when we have such great knowledge mass or experts sitting out there, it was just like connecting the bridge together and making sure different verticals talking to each other. So these were some foundations principles which we followed while we redesigned our approach around breeding and seed system dissemination to integrate market, society, and the agriculture research together into an interwoven fashion. So thank you very much. We now open the floor for questions from the audience.
ma'am. Thank you for the presentation. I'm Manish. I'm a participant at DMI. So, my question is like, what would be that one line message that we can carry to the farmer? Because the seed as a product stops at the farmer. And how is that segmented market transmitting into a segmented market for the consumer who should be aware or should have that pull factor for this climate resilient variety of rice? Yeah. So the segmentation driven by the consumer is something which starts at the pre-research stage. The before we put in our research, we must have the broader macro level scenario. So the consumer and market driven segmentation gives us a picture that where we should invest our millions and etc. Because that calculation has already taken care of that how many farmers, how many acreage, how much of volume of that similar product is ruling and etc. So instead of reinventing and telling them to grow something very different, but what we are trying over here to bring newer competitive products so that they don't lose the genetic gain, because as the varieties get older, they their genetic gain potential reduces, they becomes more susceptible to disease and pest. And it's a time like it's like a life cycle management. If really they're growing a 40 to 50-year high yielding varieties, so probably it is because we are not able to provide better variety. Either we stop breeding or we allow us we do that. If we are breeding, how we do the replenishment also, that is important. But when we go to farmers to explain and communicate, it should not be the way that the way we are looking at the market segment. We have to explain the farmers what are the USPs or values in that product for him or her. That's very simple. Until that, I gave an example that I cannot go and advocate farmer to grow a X biofortified variety because it has high zinc. Because eventually for consumers, it may have a nutrition value, but a farmer he needs a production volume as a one of the tangible outcome also. So for farmer communication, it needs to be simplistic in terms of economic value first, and priority, like how much producibility you will have under optimal condition, and other also under non-optimal condition in under your management practices. What is the grain quality and what are the other advantages. Suppose I am taking a product which is 120 days, I can explain him and say, okay, look, in Bihar if you grow a 120 days variety instead of 130 or 140 days, you will get a window period to show the wheat variety and get a early moisture advantage. So it's a big advantage for the farmer by pushing the cropping cycle. So he will go for a 120 days variety, why would he go for a 140 days variety? So in simplistic way, like what is the advantage he will gain in terms of cumulative economic gain should be our approach for the farmers. Hi, Mukul Verma. Madam, thank you for the broad presentation. Madam, your thought is seat without borders. It is possible of this present political scenario in international country or our country. Yeah, certainly when it comes to regional cooperation policies, it is always always I would say a little tricky and shaky boat, depending upon the political will and what are there. But having a framework and having a system in place, it really makes it feasible, and we have seen the practical examples. Certainly Erie was there as an honest broker for this entire whole process of science thing. So that probably is something which we can see that where an international agency can sit and talk to different countries to have that trust values and doing it for the farmers as a whole together and etc. Because
eventually it is benefiting the farmers, and there is no agenda over here. And then that is something which is also part of an advocacy process, not just having we all say policy on paper, maybe their execution is the most toughest thing for many policies, and it requires a lot of advocacy, and we try to keep doing. Now we have been talking with different ministry to have a dedicated cell to have a hassle free germplasm exchange. We are trying to develop MOU designs and formats by which it is become hassle free, because every time it is certainly needs a moderation. So yeah, so far we have not reached to a stage where we exit from the pictures and we don't do, but yes, but the ground impacts are palpable and we see the results. So we want to honestly strengthen this cooperation. Ma'am, I have a question. I'm Rajiv Kumar and I work with UNICEF. Thank you for a very interesting talk. I have a question around, as you talked and mostly talked about seed and that particularly around the paddy. So the question is that if we are not looking seed, as an input, as you have been arguing, or as a product, then what do you think role of market? As we are talking today, a whole lot of farmers are marching to Delhi precisely to oppose some of the market intervention which government has been thinking. And that too, please explain in the context of our states or the state you come from. Thank you. Yeah. See, I do feel that in the era which we live, and the market forces probably going to be more stronger and stronger in future. We need to also model our farmers and farmer institutions to adapt to those kind of needs. Certainly, at certain point of the time, some kind of policy cushioning and overarching, and we are lucky in India. Probably we have so much of these things where we do have many safeguards by government policies and etc. And rightly so. But at the same time, we need to remodel our farmers and their institutions for the market factors, and that is the reason why we followed this kind of approach. In terms of seed enterprise and etc., what I do see that I gave an example because this is the space where I worked. But many of these institutions with whom I worked, they are not only dealing with rice as a commodity. One of the our entry point is also there to have a diversified strategy, because they may not have an economy of scale by only growing and selling rice seeds alone, and this is a fact. So how we, because if you go to an input dealer to whom who sells the seed, they don't only sell the seed of rice, they will seed for multiple commodities. And hence we bring in other stakeholders also to train them other qualities, other products, other commodities to go as a together also. And when we work in different belts in many states in India or even other countries, we are talking about rice-based food system approach rather than rice cropping system approach. So in this food system approach, we are having a diversification as a clear goal, and many of these early maturity, early duration market segments are prioritized these days. Why? Because to give a window to other crops, be it wheat, be it pulses, be it mustards and etc. So that probably can give a very good economic value for the farmers. Obviously rice would be there as one of the flagship food security crop for them, but then there is a significant number of rice fallows in India sitting down there, and we are trying to also defallow those things and introduce early maturity segments more and more to the things, like Punjab, how the PR 126 is superseding now Pusa 44 is a story that where government is discouraging now to get rid of longer duration rice varieties, go for early maturity rice varieties. So this is because of the changing market factors and market economics, I would say that. Yeah, this is Rajeshwaran here, a professor from DMI. Recently, the government of India from March 1st is going to supply PDS, artificial rice, towards encouraging hemat and anemic in anemia in the PDS. What's your opinion on the artificial rice, especially they say is that has not been accepted by the tribals, especially in Orissa also. Even the cows, even the pigs do not eat those rice. And the government of India has decided 100% to
supply through PDS artificial rice in the country? What's your opinion on it? Which rice? Artificial rice. Oh, okay, okay. Yeah, yeah. Okay. As an agriculturist, I do believe that the future lies with if we are talking about nutrition. I think this is best on, like, what a discussion I had in a conference where the Food Corporation of India, MD was there, and he also said that, Kiswati, we all agree that biofortification is the future answer for stopping this artificial fortification. And one of the news just probably 10 days back, delighted me like to the core, when I studied an article where Odisha government and Odisha State Seed Corporation are going to do exactly same what you say through PDS, but with biofortification, biofortified rice. So I remember my conversation with agriculture minister. I mean, different school of thoughts might be there, but we had a very good conversation around this thing, that he said about that, fortification industry challenges, non preferences of those palatability issues and everything, and etc and everything. And we had a very detailed discussion with about this biofortification program. The challenge was there that not much volume or not much options were reaching to the farmers to have that bulk production, supply chain, and etc. But I am very hopeful the next decade will have a lot of promising these kind of things, and lot of programs with national partners and CGI are doing on biofortified rice, be it zinc, iron, and etc. Yes, a lot of research has to be done on multivitamin, etc. So right now we mostly have, like, say high zinc or high protein or high iron. So fortification, what does that? They do multiple integration of multivitamins and etc. So maybe research might take a time, but over the decades we will have a lot of options to have. And this can be a mainstay for the farmers if we streamline in the PDS system. So I'm very hopeful that biofortification rice will also have its share, so that it is easy. I mean, you don't have to be rely on also in PDS. Everyone will grow a rice, and naturally it will be like a silent revolution when they will take that rice in their food chain. No, no, we are doing. No, we are doing it. In many of our market segments, or most of our market segments are transplanted rice, but also few are direct seeded rice. So wherever there is a room, we are trying to create better germplasm for direct seeded system. For example, I said in many areas, like, you go to in many belts of Africa, you go to India's eastern belt and etc. There are traditional direct seeding belts also, and then there are belts where there is potential of direct seeding. So hence we don't have germplasm option. So if we go just as an agronomy and mechanization practice, probably we might fail. So lot of questions has been there on the adoption part. For last a decade, DSR has been there as a mechanized direct seeded concept, but still we are struggling, especially in Punjab, Haryana region. In COVID time, there were articles that DSR was a boon because labor shortage and everything were there and etc. But as soon as labor started coming back, the lakhs of area got reduced to only thousands, few thousands. So there remains, challenges, which is socio-cultural, which is other technical aspects also. So adoption is a concern over there. So if we do not streamline, product or breeding programs around that, so we are not thinking futuristically. So hence, thinking futuristically, we have launched direct seeded segment along with predominantly transplanted systems, because it cannot happen overnight and etc. It needs to coexist. Thank you, everyone. Thank you, ma'am, for your deep insights and profound thoughts. Your achievements and contributions deserve a round of applause. May I request the audience to give a standing ovation to our chief guest, Dr. Swati Naik.
Now we request our director, sir, to present mementos as a token of appreciation to the distinguished guests on the dais, Dr. D.R. Singh and Dr. Swati Naik. Now, I would like to invite Professor Surya Bhushan, Professor DMI, to deliver the vote of thanks. So, thanks everyone. So, ladies and gentlemen, an esteemed guest from different institutions as well as press and media, our colleagues and participants, as we bring out our event to a close to a first session. This is a special first session. It is my privilege to express our heartful gratitude to all those who have made this event a gathering truly memorable. Uh, so, the enlightening experience also. On behalf of everyone present, I would like to extend my our sincere gratitude to Dr. Swati Naik, a highly distinguished Borlaug Award winner and champion for climate resilient agriculture. Your talk on climate resilient and agriculture was informative, captivating, engaging, and was particularly on the powerful call to action. That is where we found it's very interesting. You painted a stark picture of the challenges we face, particularly on the related with the climate change, rising temperature, erratic weather fall, weather pattern, and these are the things which is creating a serious food security problems. Yet within your words, you brilliantly ignited a flame of hope. Uh, on a personal note, Dr. Nayak, your journey and unwavering dedication are truly inspiring. As you said, the symphony of uh, the trained manager and trained scientist. It's basically it's a very interesting, and that is how you demonstrated that uh, accomplishment. So your emphasis on innovation, collaborations, and farmers empowerment, particularly on those aspects, it's resonated deeply with us. And you reminded us that the solutions, much like challenges, uh, are also very complex and multifaceted. Yet, by harnessing collective power of science, policy, and community action, we can build resilient and navigate this unprecedented the change which is the planet is witnessing. Let us join in resounding round of applause for Dr. Swati Nayak. I would also like to express our gratitude to the distinguished guest, Dr. D.R. Singh, Vice Chancellor, Bihar Agriculture University, Sabur, who has come all the way from Bhagalpur to grace this occasion. We are truly honored to you, sir, for your gracious presence. This not only adds prestige to this celebration, but also underscores your unwavering commitment to academic excellence, innovation, community engagement, and our future, as you mentioned, the future collaborations with the institutions. We are deeply grateful to you, your leadership and vision, which guide us towards our greater achievement. Thank you, sir. So, as we celebrate
in this midst of serious introspection of the decadal journey of DMI, our 10th years of DMI's legacy, we express our deepest gratitude to the individual who has steered uh, our ship with unwavering dedication and visionary leadership. Our director, Dr. Devi Prasad Mishra, your consistent, reassuring presence have fostered a sense of community, purpose, and excellence within our walls. So, under your stewardship, our institute has not only weathered unforeseen challenges, but also emerged stronger and become more engaging. Thank you, sir. We are deeply grateful for your commitment, inspiring leadership, and genuine care for the institute. Please join me a hand in warm round of applause for our esteemed directors. I would also like to express our gratitude to volunteers, colleagues, and PDM participants, especially Director and Dean, who have contributed to the success of today's event. Your participation, support, and enthusiasm has uh, instrumental in making this a resounding success. Last but not the least, I would like to thank our uh, uh, in fact, distinguished guest, especially from the press and media and from the development organization as well as supporting organization partners for active engagement and your presence here. Your presence today demonstrated your dedication to addressing the pressing challenge of our time. As we conclude this session, let us carry forward the insights and inspiration which we have gained today we have gained today, sorry, we have gained today to make this equitable and sustainable future for the planet. Thank you, everyone. And in fact, in the last, let us rise to the occasion for the national anthem. Yes. So we can have Jana Gana Mana. Jana Mana Adhinayat Jaya He Bharat Bhagya Vidhata पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नास्ति जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे थैंक यू थैंक यू एवरीवन Thank you so much, sir. Now I request all participants to proceed for the lunch arranged in the hall. We will assemble back at 2:30 p.m. for the panel discussion.
Good afternoon and warm welcome to the second session, a panel discussion on career opportunities in Bihar by our esteemed panelists, followed by the questions and answer session. We have with us participants from universities, many young minds from the community library and career development centers of Jivika to benefit from this discussion. We extend our warm welcome to them. DMI, in this endeavor to help students, has launched a 3-month certificate course in management, enhancing employability skills. The program was well received by college students and job seeking applicants. There is a felt need among the youth to have a guiding hand given the innovations and fast paced changes in technology and adapting them to build a career. Today, we have with us Professor Ashok Kumar Singh is a political science and public administration professor at Patna College, Patna University. Mr. Sudhir Kumar Singh, the Center Director of Time Patna. Sri Shashi Sharan, founder and director of the Officers Academy. And Sri Durgesh Kumar, founder and director of Say IAS, as our esteemed panelist. Professor Sankar Purve has graciously agreed to moderate this session, Career Opportunities in Bihar. I request all the panelists to take their respective seats on the dais. Professor Ashok Kumar Singh is a political science and public administration professor at Patna College, Patna University. He has written courses on political science and public administration for the intermediate to masters at Nalanda Open University, Patna. He has also written several books on the area of political science and public administration. He is regarded by the aspirants of civil services as a mentor too. Mr. Sudhir Kumar Singh is the Center Director of Time Patna. Time is the most revered name for aptitude training, especially the MBA entrances like CAT, IPM, and others. Headquartered in Hyderabad, it has a pan India reach and a presence in more than 100 cities in India. Mr. Singh is an MBA graduate and UGC NET qualified in education and management. Among his students, he is also known as a devoted learner, passionate coach, and committed trainer. He has been instrumental in the success of thousands of students with his 15 plus years of extensive experience in teaching, guiding, and mentoring aspirants of CAT, CLAT, IPM, banks, and others. Sri Shashi Sharan is a youth who has won the trust of lakhs and lakhs of students in the past few years. He is a passionate teacher who has resigned from a government job to pursue his passion for teaching. He had started career with rupees 60 a day to millions now. An educator who has taught more than 5 lakh students in the last 3 years, a torchbearer of online education in Bihar started in 2019 and many more. Sri Durgesh Kumar is the founder and director of Shea IAS. He is a notable guide and mentor of civil service aspirants. It is an institution dedicated only to civil services, UPSC, PCS, known for result oriented programs. The organization is famous for the best results under the direction of Durgesh Kumar sir. The only resolution of organization is to have IAS, PCS officers at home. The organization considers the dream of resourceless poor children as its own and gives full support to them and helps them reach their destination. Professor Sankar Purve holds a PhD in industrial engineering and management from IIT Dhanbad. Before joining DMI, he was associated with IM Shillong for more than 10 years. He has over 15 years of industry, teaching, and research experience.
He was awarded the National Doctoral Fellowship by AICTE while pursuing his PhD. He has international publication to his credit and has presented papers at various national and international conferences. He was also extensively involved in consultancy assignments, including executive training programs for both government and non government organizations. He has coordinated more than 15 executive training programs and 3 certificate courses. Certificate courses include courses on tourism and hospitality management and quality assurance in healthcare delivery. I request now Professor Purve to felicitate the panelists. Now I request Professor Purve to moderate the panel discussion and the question and answer session. Thank you, sir. थैंक यू प्रेरणा। हम लोग इस सेशन को मोस्टली ट्राई करेंगे हिंदी लैंग्वेज में लेने का। सर्टेनली बाई लैंग्वेज विल बी ओके। हमारे साथ CLCD के पार्टिसिपेंट्स भी हैं और जैसा कि आप सब हमसे बेटर परिचित हैं बिकॉज आप फर्स्ट हैंड स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं जो कि 10th के बाद और 12th के बाद हमारे पास मूव करते हैं कि बिहार में मोस्टली हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा अपने आप को अटैच कर पाते हैं। तो हम लोग बात भी करते हैं कि जब हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं तो हिंदी में पढ़ाते हैं, मजाक में कभी कभी हम ये भी यूज कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करें कि हिंदी में बात करने का मोस्टली, जिससे कि सबों के लिए ये मच बेटर हो सके। पर्पस इस सेशन का हम एक बार बता दें अपने पैनलिस्ट को कि हमारा पर्पस है पार्टिकुलरली 10th तक हमारा डेटा बताता है अप टू 12th तक बिहार में काफी करोड़ों में लोग रहते हैं नंबर्स, पर जैसे ही 12th के बाद ग्रेजुएशन का नंबर आता है तो टोटल डेटा में मैक्सिमम 15% ही लोग हैं जो ग्रेजुएट हो पाते हैं। रिसेंट डेटा भी बताता है यही कि 13 करोड़ पॉपुलेशन में हमारे पास हार्डली 1.8 करोड़ जो है ग्रेजुएट है। और जब ये डेटा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आता है तो फाइनली रिड्यूस हो जाता है 0.82% के आसपास और ये लाख में आ जाता है। टोटल पॉपुलेशन जो पोस्ट ग्रेजुएट है बिहार में वो सिर्फ 80 लाख है पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स। और इसमें भी देखा जाए तो ये पूरे पॉपुलेशन की बात की है। 20 to 30 एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर है सिर्फ अराउंड 2 करोड़ के आसपास, 15%, 1.8 करोड़ पॉपुलेशन। ये हमारा एक्चुअल डेटा है एज पर 2023 में जो सर्वे हुआ उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। तो हमारा जो ट्रांजिशन दिखता है कि एक फनल की तरह कि 12th तक का जो सिनेरियो था फिर ग्रेजुएशन में क्या आ जा रहा है और पोस्ट ग्रेजुएशन में सिनेरियो कितना पुअर होते चला जाता है। सर्टेनली देयर आर डिफरेंट रीजंस हैं, आपको पता है। हम लोग कुछ मिनट उसके ऊपर लेके बात करें, उसके बाद प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं, उस पर सब लोग वाकिफ ही हैं। हमारा मेजर फोकस हो जाएगा अपॉर्चुनिटीज और के ऊपर कि क्या इनके लिए अपॉर्चुनिटीज है, क्या हमारे स्टूडेंट्स को करना चाहिए और इनको समझना चाहिए कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। इसलिए डेटा कभी भी इस चीज को नहीं बताता है कि कितने अपॉर्चुनिटीज भी हैं। हमारे यहाँ क्यों पोस्ट ग्रेजुएशन है उस पर नहीं जाएंगे, कैसे पोस्ट ग्रेजुएट भी एक अपॉर्चुनिटीज है, जॉब्स भी एक अपॉर्चुनिटीज है। जब हमारे पास कुछ दिन पहले टीचर्स का भी वैकेंसी निकला तो एक क्वेश्चन आ गया कि उतने पॉपुलेशन नहीं होंगे जितने की जॉब्स है, तो हम ओपन कर देते हैं बाहर के लोगों के लिए भी। तो ये भी एक सच्चाई है कि वो सिनेरियो भी आ जाता है।
तो इस सिनेरियो से कैसे बाहर आया जाए, कैसे इनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को दिखाया जाए, not only focused on a management education, because डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में अगर हम बात करें तो हम एक गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस है बट ऑटोनोमस इन नेचर है। हमारा एक प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डेवलपमेंट मैनेजमेंट, बट हम अपना लार्जर ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है एज एन इंस्टीट्यूशंस कि बिहार में एजुकेशन कैसे बेटर हो जाए, हर तरह से हर फील्ड में बेटर हो। तो हम कहीं से सिर्फ मैनेजमेंट एजुकेशन फोकस नहीं है, हम चाहते हैं कि बच्चों को हर कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चले, एंड दैट्स व्हाई हम सब इकट्ठा हुए हैं जहाँ पे कि हम ये भी बता सकें कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फोकस करते हैं तो कब तक फोकस करें, कैसे फोकस करें कि बेस्ट रिजल्ट आ जाए। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहें तो उसके लिए कैसे बेटर करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आप क्लैट के लिए चाहें तो कैसे लॉ में बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो हर सेक्टर में हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, नेट में भी है, जीआरएफ भी है। तो हमारे पास अगर 80 लाख पॉपुलेशन भी है तो 80 लाख पॉपुलेशन में कितने लोग इसके लिए जाएंगे, तो वो नंबर्स ऑटोमेटिकली कम होता जाए। तो हम उन अपॉर्चुनिटीज को इनको दिखाएं जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एवरीबॉडी समझ सकें कि कैसे एजुकेशन का वैल्यू है और ये बढ़ते रहना चाहिए। तो इस पे फोकस रहेगा। तो हम एक फॉर्मेट में चलेंगे, हर पैनलिस्ट को अराउंड 15 मिनट्स का टाइम हम लोग लेते हैं और 15 मिनट्स पे आप डिस्कस करें अपने सेक्टर से कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सेक्टर में अवेलेबल हैं और इनको कैसे बेटर वे में उस अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहिए। राइट सर? तो हम स्टार्ट करें पहले अशोक सर से, ठीक है, सबसे सीनियर मोस्ट सर है तो हम उनसे डिस्कशन करना स्टार्ट करना चाहेंगे। आदरणीय शंकर पूर्वेश सर, हमारे मित्र दुर्गेश सर, सुधीर सर और मित्र और छोटे भाई शशि जी, आप लोग, सबसे पहले सर ने बताया यह लैंग्वेज वाली जो बात है और जॉब, इसको लेकर हम लोगों को अपना भ्रम छोड़ देनी चाहिए। दूसरी बात, बिहार में अवसर की कमी, इस बात को भी हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। एक बिल्कुल अपने ग्रामीण क्षेत्र का, समीप का एक उदाहरण बाद में देंगे। पहले हम यह बताएंगे कि किसी विषय वस्तु को समझने का भाषा माध्यम हो सकता है, और अभी तो देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भी इस भाषागत प्रबुद्धता के प्रभुत्व वाली बात जो रही है वह समाप्त हो गई है और हो जाएंगी। हम हर रीजनल क्षेत्र में उस रीजनल लैंग्वेज को आधार बनाकर जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो जॉब और कैरियर केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। कभी कभी लगता है, हम लोग सोशल मीडिया या कुछ जानकारी मिलती है उसमें हम लोग देखते हैं क्यों ऐसा किया है, आईआईटी किया, विदेश में गया, काम किया, उसको छोड़कर वहां से और यहां आकर ग्रामीण क्षेत्र में एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशरी वगैरह का काम कर रहा है। मैं सिवान जिला से आता हूं और मेरे जिले का सबसे, जैसे कि मोकामा टाल क्षेत्र है, बहुत फेमस है, उसी प्रकार का एक क्षेत्र है। मुझे लगता है कि 2-3 किलोमीटर एरिया में है, और बहुत पढ़ा लिखा जो अमेरिका में रह रहा था वो आया, और आने के बाद उसी एरिया को जहां पानी लगा हुआ था उसको डेवलप किया कि आधे पानी वाले क्षेत्र का मिट्टी निकालकर और शेष में रख दिया, और वहां उसने मछली पालन का काम, फिर एक फॉर्मेशन वगैरह के लिए अलग, पोल्ट्री वाला अलग कंसेप्ट, और सब करके वहां फैक्ट्री लगाया। अभी लगभग 200 के आसपास वो ट्रांसपोर्ट से लेकर प्रोडक्शन तक, फिशरीज तक आदमी को रोजगार दिया है, उसने वो छोड़ दिया। तो हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले यह होनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी हर क्षेत्र में है। बिहार का नाम सुनते हुए इधर तो काफी जॉब निकले हैं शिक्षा में। सर बताए कि पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में नंबर ऑफ लोग कम है, लेकिन इधर जॉब को लेकर देख रहे हैं कि गांव वगैरह में जो लोग भी रह रहे हैं वह बीए में करना चाहते हैं। गांव की बहुएं
ओपन यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट के आधार पर वो शिक्षा ले रही है, और गांव में भी अभी जो साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट के कारण कोई प्रोडक्शन होता है तो वह बाजार तक पहुंच रही है। इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में बढ़ गई है। जॉब और करियर का मतलब अगर केवल गवर्नमेंट को माने तो वह सीमित होता है, क्योंकि निश्चित रूप में अभी जो सरकार थी और फिर सरकार बदली है, उसमें मैं किसी राजनीतिक दल से मेरी संबद्धता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप में पिछले 14-15 माह में बिहार में इस प्रकार की सरकारी क्षेत्र में और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जॉब के अवसर बहुत बढ़े हुए हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है कि इतनी वैकेंसी निकली, आदमी नहीं मिल रहे हैं। उसका कारण हमारी पॉलिसी है। कुछ विषय में साइंस वगैरह में निश्चित रूप में साइंस कॉलेज में मैं बात बताऊं, सीट खाली रह जा रहे हैं। जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी वगैरह में स्टूडेंट एडमिशन के लिए नहीं आ रहे हैं। सोशल साइंस में एडमिशन हो जा रहा है। तो बाहर वाले साइंस में जैसा कहा गया कि टीचर नहीं हमको मिल रहे हैं साइंस वाले, हाँ, साइंस में एमएससी वगैरह नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, वैकेंसी जा रही हैं। लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी से सोशल साइंस में बहुत लोग कर रहे हैं, जो टीचर हैं भी और उसके बाद भी ओपन से कर रहे हैं। वहां जॉब का अवसर है। अभी हायर एजुकेशन में 2020 में नई शिक्षा नीति आ गई है, और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अगर 30 स्टूडेंट पर एक टीचर अगर चाहिए तो उस प्रकार का रेशियो हमारे यहां नहीं है। कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं है। पूरे बिहार में 4000 4,500 के आसपास सभी प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की स्थिति है। सभी पद खाली हैं। और महामहिम, अब उन्होंने कहा है कि महामहिम ना कहा जाए, माननीय कहा जाए। तो अभी हम लोगों को जो आदत बनी हुई है कहने का, तो महामहिम के अनुसार 36,000 गवर्नमेंट के अभी ओपन नहीं आया, 36,000 लेक्चरर की बहाली आने वाले दिनों में होंगी। और हमारे पास नेट नहीं है, पीएचडी नहीं है, और इसके लिए सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि एक बिहार लेवल का टेस्ट लिया जाएगा, बेट लिया जाएगा। जैसे नेशनल लेवल पर नेट होता है, जेआरएफ होता है, उसी पर बिहार पर लिया जाएगा। तो एमए की आवश्यकता है, कराने की आवश्यकता है, और बेट में आएंगे तो वहां भी अवसर है। एमए जो पास किए हैं उनके लिए बहुत बेहतर अवसर अगर सरकार ने लिया है, और 36,000 अगर पोस्ट हो जा रहे हैं तो बाहर के लोग आएंगे, लेकिन सभी सीट पर तो बाहर के लोग नहीं आएंगे। तो वह एक बहुत अच्छा अवसर है। स्कूल वगैरह में आप लोग वैकेंसी देख रहे हैं, उसमें भी लगातार, चूंकि अभी पाठक सर आए और पाठक सर के द्वारा लगातार प्रयास किए गए, इतनी वैकेंसी निकली। और पहले वाले जो लोग हैं वो अवकाश प्राप्त करेंगे, और उस क्षेत्र में वैकेंसी है तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक नौकरी दिख रही है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है गवर्नमेंट में। इसी प्रकार मेडिकल वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं, इतने मेडिकल कॉलेजेज हो गए हैं। सरकार का बिहार में भी हर कमिश्नरी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज होंगे, लेकिन अभी भी ब्लॉक के लेवल पर अच्छे डॉक्टर नहीं है। अगर किसी गांव और चट्टी जो होता है कस्बा, वहां भी समान रूप में जानकार जिसने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है, किसी अस्पताल में जाकर कुछ काम किया है, कंप्लीट स्किल भी पूरा नहीं किया है। बहुत नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में भी सर बताएंगे भी मेडिकल वगैरह कोर्स वगैरह बहुत कम दिनों का, जो फर्स्ट एड वगैरह से कंसर्निंग है, वैसे कोर्स कराए जा रहे हैं। वैसे करके भी हम कस्बा के लेवल पर भी बैठकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, और फिर गवर्नमेंट के लेवल पर जो जॉब है स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। अभी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उसका सैलरी हम लोग नहीं देते हैं। परिवहन के क्षेत्र में चारों तरफ स्किलफुल हम लोगों को ड्राइवर नहीं मिल रहा है। अगर उसमें व्यवस्था किया जाए, सैलरी 10 से 12 हजार मिल रहा है,
22,000 20,000 भी किया जा सकता है। उसके लिए कोई प्रोग्राम चले, उसमें भी सरकार ऐसा करे तो उस क्षेत्र में भी अपॉर्चुनिटी है। और ग्रामीण क्षेत्र में हम जहां हैं, शहर में अब आने की आवश्यकता नहीं है। मोदी गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट, लोकल वोकल वाला जो कंसेप्ट है, गांव में भी ऐसा किया जा सकता है। मैं शुरुआती दिनों में 8 क्लास से लेकर 10 तक अपने गांव के स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए फिर पटना आया। तो हम लोगों के समय जब बच्चे थे तो पपाया, पपिस्ता वगैरह यह बिकता नहीं था। कोई किसी के बगीचे में से अमरूद, पपीता, जामुन यह सब खा सकता था। गांव का जो कंसेप्ट है, बहुत लोग ऐसे हैं, यह किसी की नहीं होती थी। आज की तारीख में हमारे गांव में एक ऐसी महिला है, उसका बेटा जो है एयरफोर्स में काम करता है और बहू वो रहती है, और पपीते की ट्रेडिशनली अपने आप से उगा हुआ है, फोन वह सिवान कर देती है और आता है, लेकर चला जाता है, और 2-4 महीना पर उसको 5,000-6,000 रुपया मिल जाते हैं। तो अगर व्यवसायिक रूप में बढ़िया से अवसर बनाकर अगर उस प्रकार का काम किया जाए तो उस क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अवसर की कमी नहीं है। मैं संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन को निर्देशित करता रहा हूं, और विशेष रूप में यूजीसी की तैयारी करने वाले बच्चों को मैं राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूं। उस पर मैंने लेखन भी किया है। 23-24 वर्ष पहले से मेरी पुस्तकें आ रही हैं। तो बहुत ऐसे लड़के हैं जो उस प्रिपरेशन में लगे, एक बार में नहीं, अब 2 बार परीक्षा होती हैं। जब जितने लोग एमए पास हैं, यदि अपने पेपर में वह 55% के साथ पास हुए हैं तो ये नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और करने के बाद नेशनल अलग अलग समय सभी जगह वैकेंसी आएंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट नहीं लेना चाहती। केंद्रीय विश्वविद्यालय में अधिकाधिक पद रिक्त है। क्या कहा जा रहा है कि उस रूप में जो क्राइटेरिया है वैसा आदमी नहीं मिल रहा है। तो नेट की तैयारी करके, अभी बेट बिहार में निकलने वाला है, जब हो जाए उसकी तैयारी करके एमए वाले बच्चे उधर जा सकते हैं। वाली बंदिश नहीं ना, थोड़ा 2-4 मिनट। हाँ, स्कूल वगैरह में के लिए जो बीएड कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त भी जैसा कि नेट होता है, सीसेट या स्टेट होता है, ऐसे करके टीचिंग में लोग जा सकते हैं। और टीचिंग की स्थिति यह है, यहां पटना के प्राइवेट स्कूल में टीचर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अभी सब चले गए, अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं। मेरा बेटा पढ़ता है तो कहता है, क्लास जो दूसरे के बदले में ली जाती है, पता नहीं उसका टर्मिनोलॉजी है, तो कहता है कि सर लोग नहीं है, सब चले गए, दूसरे लोग आ रहे हैं। तो यदि अपना विषय खास करके साइंस स्ट्रीम की मैं बात कहूं, जो भी अगर ऑनर्स किया हुआ है, बीएड कर लिया, तो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाए, प्राइवेट सेक्टर में, स्कूल में, पटना में टीचर नहीं मिल रहे हैं। बाकी जगह क्या स्थिति है? तो टीचिंग के फील्ड में है। और मैं चूंकि राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन पढ़ाता रहा हूं, उस आधार पर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की जो तैयारी करने वाले हैं कर सकते हैं। और उदास नहीं होना है, नकारात्मकता हटा देनी है। जैसे हम हार्ड लेबर करेंगे और नकारात्मकता को हटाएंगे, अपार अवसर मिलेंगे। मुझे तो समय ही नहीं मिलता, लगातार जैसे कुछ भी ले लिया, बैठ गया, लिखना शुरू किया, तो मैटर लिख लेंगे तो किसी पब्लिकेशन हाउस से बात करेंगे और उसमें होगा कि हम ऐसे करते हैं सर, इतना देंगे, इतना, तो काम कर लेते हैं, दे देते हैं। तो काम किया जाए। बैठने के कारण एस्ट्रोलाइसिस का पीड़ित हो गया हूं, तो बहुत अधिक अवसर है।
गांव में भी हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, कोई भी काम करेंगे अवसर हैं। इसीलिए अवसर को लेकर और भाषा को लेकर हीनता का शिकार नहीं होना है। जहां पर हैं लगातार काम करेंगे, कोई भी काम, तो उसमें अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। अब हम शशि सर से बोलेंगे कि ओके सर, कोई बात नहीं, आप डिसाइड कर लेते हैं। शशि सर आप बताएं। देखिए मेरी बारी है ना, खड़ा होके बोलने की इजाजत है क्या? वो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। तो मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी। बहुत सारे लोग इसमें मुझसे परिचित होंगे और बहुत सारे लोग परिचित नहीं भी होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूं और अपने जीवन काल के दौरान मैंने जब टीचिंग करियर की शुरुआत की थी 2011 में, तो मुझे 60 रुपए एक दिन के मिलते थे और आज शायद मिलियंस में एक दिन का अर्निंग हो जाता है। तो मैं अपने आप से उदाहरण देना चाहता हूं कि जब मैं एक निराश और एक हताश व्यक्ति की तरह महाराष्ट्र से लौट कर आया था, तो मुझे शायद मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं एक दिन में कुछ पैसा कमा पाऊंगा और आज शायद स्थितियां बदल गई हैं। मैं आप सभी लोगों से दो चार बड़ी बातें कहना चाहता हूं। सभी गणमान्य लोग हैं, हम इनसे पढ़ते हैं, लिखते हैं और सीखते हैं। मैं बहुत दो चार बड़ी बातें हैं कि हम सब जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं या गांव में किसी सरकारी विद्यालय में या विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वो कोई अंबानी और अडानी के बच्चे नहीं होते। वो बच्चे एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं कि जिनकी सबसे अच्छी ऊर्जा जो होती है, सबसे अच्छी सोच जो होती है, वो किसी एक बड़े पदाधिकारी के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेना होता है। वो सोचते हैं कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन जाऊं, मैं डीएसपी बन जाऊं, मैं बैंक का पीओ बन जाऊं, मैं एमबीए की डिग्री ले लूं, मैं अगर एमबीए भी लूं तो आईआईएम से ले लूं, मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ना जाना पड़े, मैं सरकारी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए ताकि मेरे पिताजी का पैसा बच जाए। बच्चे इस लेवल तक जाकर सोचते हैं। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो उन सोच को रखते होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो नियति में लिखा है वो आपके साथ होगा। मैं दो तीन की तरफ इशारा दिलाना चाहता हूं, उसमें अभी तक ध्यान आकर्षण नहीं हुआ है सर का। जिस शिक्षा पद्धति की हम बात कर रहे हैं, जिस हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें शायद कमियां हैं नहीं, हकीकत में कमियां हैं। हम जिन विश्वविद्यालयों से पढ़ते हैं, हम जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, हम जिन कॉलेजेस के अंदर में जाते हैं, कमियां हमारे पिताजी में हैं, कमियां हमारी माताजी में हैं, कमियां हम सब में हैं। मैं अपने घर का उदाहरण देता हूं और आप में से बहुत सारे लोग लागू करेंगे उस उदाहरण को कि जब मैं आज ठीक हूं, मैं स्टेबल हूं, तो मुझे लोग फोन करते हैं कि बेटा 10th क्लास को पास कर गया है, मैं इसको नीट और जेई की तैयारी कराना चाहता हूं और मैं इसे कोटा भेजना चाहता हूं। तो मेरा अगला सवाल यही होता है कि फिर इसका 11th 12th कैसे होगा? तो वो जवाब आता है कि मेरा बेटा है, वो यहाँ पे स्कूलों में कर लेगा, आकर परीक्षा दे देगा। ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है जो पेरेंट्स करते हैं और इसीलिए मैं कभी कभी किसी मंचों पर कह देता हूं, मैंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी कहा है कि कहीं ना कहीं अगर बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में कमजोरियां आ रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनके माता और पिताओं की है, जो वहां से वो कमजोरी पैदा शुरू कर दे हैं। आप इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए। मैं 1-2 मिनट का सर समय ज्यादा हो सकता है ले लूं, लेकिन मैं इस बात को बहुत गहनता से सोचने की आवश्यकता है कि क्या हमारे भाई बहन, क्या आपके बच्चे जिन विद्यालयों में जा रहे हैं वहां क्या स्तरीय शिक्षा उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है। आप में से कितने माता पिता ऐसे होंगे या कितने भाई बहन आपके विद्यालयों में जाते होंगे और आप में से शायद ही 2-4 गिने चुने लोग होंगे जो अपने बच्चों की कॉपियां शाम को 5 मिनट चाय की चुस्की के साथ पलट कर देखते होंगे और ये एनालिसिस करते होंगे कि क्या मेरा बच्चा सही से विद्यालय में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो कमियां गार्जियन की हैं। आज की इस आधुनिकता की दौर में माँ और पिताजी दोनों पैसे कमाने की धुन में सवार हैं। पिताजी ऑफिस से लेट आते हैं तो मोबाइल पर रील देखते हैं और वही पिताजी अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बच्चा मोबाइल नहीं चलाए। ये इस दुनिया में संभव नहीं है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। इस बात को सार्वजनिक मंचों से स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस माता पिता अपने बच्चों को टॉपर बनाने की चाहत रखते हैं, क्या माता पिता अपने बच्चों को प्रतिदिन 30 मिनट का अगर समय दे दें तो शायद वो बच्चा उनकी जिंदगी में उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा कर सकता है। लेकिन ये रील बनाने वाली दुनिया है, माता और पिता दोनों मोबाइल में बिजी हैं और बच्चों से उम्मीद करते हैं कि ये पढ़ाई कर ले। ये संभव नहीं। हम उस अंधी दुनिया में दौड़ रहे हैं जहां हम अपने आप को हमेशा से इंटेलिजेंट बताते हैं, हम अपने बच्चों को सबसे ज्यादा स्कूल का टॉपर बताते हैं। हर सार्वजनिक बैठकों में, हर किसी फेस्टिवल में, हर किसी शादी मिलन समारोह में भी हम अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरा बच्चा काफी अच्छा कर रहा है। उसको झूठा इंतला देते हैं, उसको झूठी तसल्ली देते हैं। कभी उससे ये नहीं पूछा होता है कि क्या तुमने विद्यालयों के अंदर में किताबों का अध्ययन किया है। आज ये अंधी पीढ़ी जिस दौर में दौड़ रही है, जहां पीडीएफ का दुनिया चल रहा है,
आप सब एमबीए के छात्र हैं, मुझे जहां तक पता है आप सभी पीडीएफ और नोट्स के पीछे भाग रहे होंगे। मेरे भाई याद रखिएगा कि अगर कोई आप अपनी आत्महत्या करने की जब बात आएगी तो स्टूडेंट्स आर मेकिंग सुसाइड बाय देमसेल्फ बाय पुटिंग एंड रीडिंग द नोट्स ऑफ द अदर पीपल। हम दूसरे के नोट्स को पढ़ते हैं। आप इमेजिन करिए कि ये किताब का एनसीईआरटी का एक पन्ना है या आपके एमबीए कॉलेज का एक पन्ना है, जिस पन्ने को पढ़ के मैंने नोट्स बनाया है। मैं एक एजुकेटर हूं, मैं एजुकेटर ओवर हियर, और मैंने इस पूरे पन्ने को पढ़ने के बाद, चूंकि मैं एक शिक्षक हूं, मुझे इस विषय का पूरा ज्ञान है, पूरा अनुभव है, तो मुझे पता है कि परीक्षा उपयोगी चीजें क्या हैं। उन्हीं पॉइंटर्स को मैंने नोट्स में लिख दिया है। एक बी नाम का बंदा, ये कैमरेमैन है, ये जो है ये थोड़ी देर के लिए एक पेज का नोट्स बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, इनको 20 लाइन इसमें नहीं आता है, वो 20 लाइन अपनी नोट कॉपी में उतार लेते हैं। आप थर्ड पर्सन है सी, आपने फिर इसी पन्ने को पढ़ा है और आप इसमें से सिर्फ 12 लाइन अपने नोट्स की कॉपी में उतारते हैं। तो इस बात को समझा जाए कि ये अंधी पीढ़ी जो इस नोट्स की दुनिया में दौड़ रही है, ये अंधी पीढ़ी जो दूसरे के बनाए हुए नोट्स पर, शिक्षकों के बनाए हुए नोट्स पर रिलाई कर रही है, ये अंधी पीढ़ी जो किताबों से, मानक पुस्तकों से दूर जा रही है, ये कहीं ना कहीं खुद के लिए जिम्मेदार है कि वो जीवन में उस ऊंचाइयों को पार नहीं कर पा रहे हैं, उस ऊंचाइयों को छू नहीं पा रहे हैं जो उनकी सोच के मुताबिक है, क्योंकि आप एक अंधी दुनिया में दौड़ रहे हैं जहां आप खुद से मानक पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, आप मानक किताबों को नहीं पढ़ रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि आप जब पुस्तकों का अवलोकन नहीं करेंगे, आप पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आपके पास 3 डायमेंशनल अप्रोच नहीं आएगा। आप सोच नहीं पाएंगे पुस्तकें क्यों लिखी जाती हैं, क्यों ना नोट्स बाजारों में बेच दिया जाए। पुस्तकें इस पर्पस से लिखी जाती हैं क्योंकि उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद आप आसपास की कहानियों को समझते हैं। आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में क्लास 9 की किताब में पालमपुर की कहानी लिखी गई, बहुत सारे लोगों ने स्कूलों में पढ़ा होगा। वो कहानियां पालमपुर की इसलिए लिखी जाती है ताकि आप उन कहानियों के माध्यम से कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। आप एमबीए की किताब, जिस भी पब्लिकेशन की आपकी किताब पढ़ाई जाती होगी, मोटी पुस्तकें होती होंगी, वो 600 पन्ने की होती होंगी, और जो नोट्स आपको बुकलेट मिलता होगा वो 150 पन्ने का होता है। ये अंधी पीढ़ी उस 150 पन्ने के पीछे भाग रही है। जिस दिन ये पीढ़ी 600 पन्ने के पीछे दौड़ने लगेगी, सफलता झक मार के आएगी, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को आप लिख के रखिए। उसके अलावा मैं आप सब लोगों से 2-4 और अलग बातें करना चाहता हूं। आज आप इस हॉल से जब बाहर निकले तो ये प्रण लेके जाएं, मेरी एक ही मुहिम है। मैंने इसके पहले बगहा में एक इनॉग्रेशन में मैं बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम में गया था, पिछले साल ही गया था, तो मैंने एक वहां बात कही थी। वहां अनुपमा सिंह वहां की एसडीएम हुआ करती थी, आईएएस अधिकारी हैं 2020 बैच की, वो भी मंचासीन थी। मैंने उस सार्वजनिक मंच पे कहा था कि इस बेंच में, इस पूरे इनॉग्रेशन सेरेमनी में जहां जहां जितने लोग बैठे हैं, इस मंच से निकलते समय, इस ऑडिटोरियम हॉल से बाहर निकलते समय ये प्रण लेकर के जाएं कि आज के बाद वो अपने भाई बहन रिश्तेदारों के जितने भी बच्चे होंगे उनको ये जरूर बताएंगे कि क्लास 10th में आपके बच्चे की 90% उपस्थिति, इसका मतलब है कि क्लास 10th में आपका बच्चा जो है 90% अंक लाएगा। अगर आपका बच्चा क्लास 11 और 12 में स्कूल 90% दिनों में गया है तो आपका बच्चा 90% अंक तक ला सकता है। अगर आपका बच्चा ग्रेजुएशन के पार्ट 1 में पूरे दिन विश्वविद्यालय गया है, पार्ट 2 में जाकर उसने कॉलेजेस की है, पार्ट 3 में कॉलेज की है, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि ना मुझे आपको जरूरत पड़ेगी, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना सर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, मैं दिल्ली के कई जगहों पर गया हूं, कई जगह मैंने जाके भाषण दिए, कई जगह मैंने पढ़ाया है। उम्र भले ही मेरी छोटी दिख रही होगी, मैंने एक दिन में 60 रुपया कमाता था। इसी पटना के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, नाम नहीं ले सकता हूं, 60 रुपए मुझे मजदूरी मिलते थे जब मैं इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट करके आया था। और आज शायद ऐसे कई मौके आते हैं जहां मिलियंस अ डे में अर्न करता हूं। उसका एक ही सूत्र है, सूत्र यह है कि नेवर गो फॉर, लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क। मेरे दोस्त, आज की संधि दुनिया में स्मार्ट वर्क नाम की कोई चीज नहीं थी है। जितना डेडिकेशन और जितना एफर्ट और जितना हार्ड वर्क आप पुट करेंगे, उस अनुरूप रिजल्ट मिलता है। आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा, आपके बगल वाले को नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। आप जितना मेहनत करेंगे, आप जितनी ऊर्जा झोंकेंगे, अगर आप दिन रात कलम घिसेंगे तो सफलता आपको मिलेगी, आपके बगल वालों को नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी पूछते होंगे कि सर मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है क्या? कुछ बच्चे होते हैं मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, कुछ लोग कहते हैं मेरे ग्रेजुएशन में पढ़ाई कैसी चल रही है, आप पीजी कर रहे हैं, आपके एमबीए की पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर आप सचमुच मुझसे पूछेंगे कि सर पैमाना कोई एक ऐसा बना है क्या, तो हाँ बना है। वो मेरा अपना खुद का पैमाना है। मैंने कहा है कि जिस बच्चे का अग्नि जेल अगर 3 दिन में खत्म, अगर 5 दिन में खत्म होता है तो उसकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। जिस बच्चे का अग्नि जेल वो 3 रुपया हुआ कलम 4 दिन चल रहा है तो उसकी पढ़ाई ठीक चल रही है। और जिस बच्चे का अग्नि जेल अगर 3 दिन में खत्म हो जा रहा है तो मान के चलो कि तुम जीवन में बहुत अच्छा करने वाले हो, तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही है। क्योंकि आज की इस दुनिया में हम लिखने से दूर भाग रहे हैं, और याद रखिएगा कि जब तक हम लिखने से दूर भागते रहेंगे तब तक उतनी ही सफलता हमसे दूर भागेगी। आप कलम खींचना शुरू कर दीजिए, आपकी सफलता मार के आपके पीछे आएगी, कोई इसको रोक नहीं सकता। मैं 2-4 और बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं। मैंने 2-3 बातें, क्योंकि यहाँ पे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, मैं 2-3 बातें और आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं। जिस नौकरी की आप बात कर रहे हैं साहब, ये सरकारी नौकरी पहले के दौर में हुआ करती थी। ये सरकारी नौकरी, मैंने शायद इसमें मंचों पे बहुत लोगों को आप में से नहीं पता होगा, आई हैव रिजाइन्ड 5 गवर्नमेंट जॉब्स।
मैंने 5 सरकारी नौकरियां रिजाइन किए, मेरे पिताजी 1-1 लाख 2-2 लाख की पेनल्टी भरते थे। मैंने बिहार में नौकरी की है, मैंने बेंगलुरु जाके सब सरकारी नौकरी करी है, मैंने बेंगलुरु जाके नौकरी करी है, 5 सरकारी नौकरियों से मैंने इस्तीफा दिया है, रेजिग्नेशन दिया है। वो एक जेनेटिकली जीन था कि मुझे पढ़ाना है। मैं नौकरी में जाता था, मेरी पोस्टिंग हुबली धरवार हुई थी, ट्विन सिटी है। मैं वहां जाता था, 3 महीने रहता था, फिर भाग के चला आता था, फिर यहाँ एक बैच पढ़ाता था, फिर लगता था नहीं यार यहीं रुक जाता हूं। मैं आपको इस बात का याद दिलाता हूं, ये अंधी दौड़ जो नौकरी के पीछे, सरकारी नौकरी के पीछे लोग भाग रहे हैं, हम हो, आप हो, मेरे भाई बहन हो, आपके भाई बहन हो, उनको जाके ये समझाना कि पहले के जमाने में सरकारी नौकरी का पर्याय ये होता था कि आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, बस इसीलिए वो सरकारी थी। आज के इस दौर में एक प्राइवेट नौकरी करने वाला सरकारी नौकरी करने वालों से ज्यादा बड़े फैसले लेता है, ज्यादा चुनौती भरे माहौल में जीता है और ज्यादा बड़ा बदलाव कर सकता है। तो आप साक्षी मानिए कि आप जिस प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, आप जिंदगी में बहुत बड़े फैसले लेने वाले हैं आगे चल के। जिस भी संस्था में काम करेंगे, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे, आपके ऊपर एक जिम्मेदारियां होंगी, आपके ऊपर एक लोड होगा। आप उस सरकारी नौकरी में जो अधिकारी आपके रैंक के होंगे, उनसे शायद आप बड़ा फैसला ले सकते हैं, आपकी कंपनी आपको बड़ा इंचार्ज बना सकती है। तो इस दौर में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी क्षमता इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कितना घिसा है। आपने कितना घिसा है साहब। ये इस दुनिया में अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, मुखर्जी नगर की लाइब्रेरियों में घूम आइए। जो लोग दधीजी की तरह वहां 12-12, 14-14, 16 घंटे अपनी हड्डियां गला रहे हैं, उनका सफलता पर पहला हक है, उसके बाद आपका हक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस बात के मुगालते में जीना बंद कर दें। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, सफलता आपके लिए किस्मत वाली चीज नहीं है। ऊपर से ऊपर वाला आके आपको एग्जामिनेशन में नहीं कहेगा बेटा रंग दो, बी आंसर होगा, ऐसा नहीं होगा। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। और अगर आपको इस बात का गुमान है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा हूं, अपने आसपास के इलाके के लाइब्रेरियों में घूम लीजिएगा साहब, आपको पता चल जाएगा कि आप कहां लाई करते हैं। हम एक अंधी दौर में जी रहे हैं जो हम अपने आप को बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट कह रहे हैं। हम इस दौर में जी रहे हैं कि हम कहते हैं कि वी आर द सुपर बेस्ट, हम बढ़िया कर रहे हैं। और उसमें आपकी मम्मी जो है बटर लगा ही देती है। मम्मी कहती है हमारा बेटिया तो एकदम बहुत बढ़िया दिन रात पढ़ दिया। ये भी एक दौर है, ये भी गार्जियन का एक सुपर फ्लो सपोर्ट है जो नहीं होना चाहिए। तो मेरा आपसे 2-3 और बात कहना है कॉलेज एजुकेशन के ऊपर। मेरे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, मैं मानूंगा कि मेरा यहां दिया गया समय, मेरा आया गया, मुझे बुलाया गया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। सब कुछ सार्थक हो गया जब इस ऑडिटोरियम से निकलने के बाद ये आप तय कर लें कि आप अपने भाई बहन रिश्तेदारों का उसी कॉलेज में नाम लिखवाएंगे जिन सरकारी कॉलेजों में या प्राइवेट कॉलेजों में प्रतिदिन कक्षाएं होती होंगी। इस बात को तय करके आज इस हॉल से निकलिए कि आप उन्हीं जगह नाम लिखवाएंगे अपने बच्चों का जहां ये तय हो कि वहां प्रतिदिन कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि 1.5 घंटे के लेक्चर में अगर आप एक लाइन सीख कर जा रहे हैं और डेली अगर 4 घंटे भी 4 लेक्चर भी कर रहे हैं, तो आप कम से कम 6 से 8 अच्छी बातें सीख कर जाएंगे। कल सरस्वती पूजा है, कल सरस्वती पूजा है। मेरे संस्था के लोगों ने मुझसे कहा जिस शिक्षक बहाली की सर बात कर रहे हैं, बिहार के अंदर में बीपीएससी की जो शिक्षक बहाली हुई है, उसमें मैंने लगभग 3 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है। सबसे ज्यादा सफलता, ये सब बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये अलग मंच है। मैं आपको सिर्फ एक छोटा एग्जांपल देता हूं। मैं नीचे मेरे कोचिंग के स्टाफ मुझसे आज पूछ रहे थे कि सर कल तो पूजा है, छुट्टी होगा। तो मैंने कहा साहब बच्चों का एग्जाम है, 15 दिन के बाद हमारी सरस्वती पूजा ऊपर क्लासरूम में ही मन जाएगी। तो मैं आपको इस बात की तरफ आकर्षण दिलाना चाहता हूं कि हम छुट्टियों वाले दौर में गुजर रहे हैं साहब। पहले सैटरडे और संडे का छुट्टी नहीं हुआ करता था। ये प्राइवेट, ये सरकारी कल्चर हुआ करता था कि शनिवार को एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं होगा। आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, आप जिसके लिए लड़ रहे हैं, उसमें आपके लिए वैकेशन नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए। आपके लिए दिवाली, आपके लिए होली सब मनेगी एक बार जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और आप अपने माँ बाप को गौरवान्वित कर देंगे। उसके बाद हर इतवार आपके लिए दिवाली होगा और हर इतवार आपके लिए होली होगा। इस बात को याद रखिए, हर दीवार। मैं वुमेन पार्टिसिपेशन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वुमेन पार्टिसिपेशन, जिस हम LFPR की बात करते हैं, लेबर फोर्स, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो की बात करते हैं, दुर्भाग्य है हमारे इस बिहार का, या यूं कहें कि सौभाग्य है, इस माटी में दोनों एंगल हैं। दुर्भाग्य इस बात के लिए है कि हमारे यहाँ का लेबर फोर्स जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेशियो है लेबर फोर्स के अंदर में, वो सबसे कम है। लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि हम बिहार की उस माटी में जन्मे हैं जहां सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए अपना लोहा मनवाने को। और बैठी हुई महिलाएं इस बात को स्वीकार करेंगी कि आने वाले दिनों में वो अपना लोहा मनवाएंगी और मनवा के ही दम लेंगी। ये बात भी तय। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस वुमेन पार्टिसिपेशन पे हम जद्दोजहद कर रहे हैं, इसकी शुरुआत हमारे घरों से होती है। मैं शायद बैठ के बोलता तो इतनी ऊर्जा से नहीं बोल पाता, इसलिए मैं खड़ा हूं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं अगर इसका कोई नियम कानून टूटा हो तो। लेकिन मैं आप इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब अपने घरों में इसकी हत्या करते हैं। हम अपनी बहना को कहते हैं कि तुम्हें रात में 8 बजे अगर घर से बाहर निकलना है तो भाई को लेकर के जाओ। हम अपनी मां से कहते हैं कि तुम्हें अगर बाजार चलना है तो तुम एक झोला मत उठाओ, मैं तुम्हारे बदले झोला उठा दूंगा।
आप साहब नारी को कमजोर मत करिए, नारी अंदर से भी मजबूत है और नारी बाहर से मजबूत है। उसके हौसलों में जान बढ़िए, उसके पंखों में उड़ान बढ़िए। नारी वो करके दिखाएगी जो किसी ने सोचा नहीं होगा। उस नारी पीड़ा को आप कमजोर मत समझिए, वो नारी कमजोर नहीं है। जब भी मैं पटना से हवाई अड्डे से उतरता हूं तो मेरा मन खुश हो जाता है कि जब महिला पायलटें उड़ान भरती हैं। डर भी पहले लगता था कि उड़ा पाएंगे कि नहीं उड़ा पाएंगे लेकिन याद रखिएगा, नारी इसलिए आज हर क्षेत्र में आगे है। इस बात को हमको आपको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सार्वजनिक मंचों से मैं ये बात कहता हूं कि महिलाओं के अंदर में जो डेडिकेशन लेवल है वो पुरुष आज भी अचीव नहीं कर पाए हैं, आने वाली पीढ़ियों में भी अचीव नहीं कर पाएंगे। महिलाएं जब ठान लेती हैं तो वो उसको पूरा करके दिखाती हैं। ये महिलाओं का डेडिकेशन लेवल है। आप देखिए इस बात को। तो मेरा वुमेन पार्टिसिपेशन को है, मैं वुमेन पार्टिसिपेशन की तरफ एक वादा आपसे लेके जा रहा हूं कि आप कॉलेज में आज के बाद अपने भाई बहन रिश्तेदारों का तभी एडमिशन कराएंगे जब वहां प्रतिदिन क्लास होती हो, चाहे वो कोई कॉलेज हो। दूसरा एक और वादा मैं लेके यहां से जाना चाहता हूं इस मंच से। वो वादा ये है कि भाई अपने बहनों को शिक्षित करिए, अपनी मां को भी पढ़ाइए अगर जरूरत पड़े तो। आपकी मां जब मोबाइल चलाना सीख सकती है तो आपकी मां जो है चीजों को, कहानियों को, किस्सों को पढ़ सकती है, पुस्तकों का अध्ययन कर सकती है, नोवेल्स पढ़ सकती है, उसके 3 डायमेंशन अप्रोच बड़े हो सकते हैं। आपकी मां सिर्फ सास बहू की कहानियां देखने के लिए टीवी पर नहीं है, उनके लिए आप कुकू एफएम जैसे संस्थाओं का, भगत सिंह की कहानियां सुनाने का तमाम ऐसे उपलब्ध है संसाधन, उनमें अपनी माओ को मोटिवेट कीजिए। आप अपनी बहनों को कहिए कि बहन तुम्हारी शादी हम तब तक नहीं करेंगे इस बिहार की धरती से जब तक तुम अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाओगी। उसको वो ऊर्जा दीजिए, वो शक्ति दीजिए अपनी बहनों को। वो आपकी बहन बड़ी हो, अगर बहन की शादी भी हो गई हो, इस बात को याद रखिएगा, अगर आपकी बहन शादीशुदा है, मेरे घर में एग्जांपल है, मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन है जिसकी उम्र 21 साल है, वो भी लगभग 3-4 सरकारी नौकरी में अभी एक पदाधिकारी के रूप में पुनपुन में पोस्टेड है। मेरी वाइफ है, मैं शादीशुदा हूं, टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरी पत्नी भी सरकारी नौकरी में अधिकारी है, मैं भी सरकारी नौकरी में था। मैं इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी पत्नी की, आपकी बहन की तनख्वाह 12,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो अपने पैरों पर खड़ी है, वो एम्प्लॉयड है। बहुत लोग हीनता का बोध कराते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मेरी बहन है, ये किसी संस्था के अंदर में रिसेप्शन काउंटर पे बैठेगी। अरे उठो मर्दो, जागो, ऊंची सोच रखो, पैदा करो अपने अंदर में उसी सोच, क्योंकि तुम्हारी वो सोच ही महिला पीढ़ी को पीछे खींच रही है। घरों से उनके बेरियों को तोड़ो, घरों से बाहर निकलने दो और उनको अपने पंख खोलने दो। महिलाएं भी अपने चाह कर बहुत कुछ कर सकती हैं इस जीवन में। तो वुमेन पार्टिसिपेशन के ऊपर मेरा एक है कि आप सब लोग आज जब घर जाएं तो अपनी बेटियों से कहें कि बेटी तुम्हारे अंदर में बहुत ऊर्जा है। और सब लोग करते हैं, आज युवा पीढ़ी कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ संकुचित मानसिकता बची है, उन बेरियों को तोड़ने की आवश्यकता है। उसके अलावा अपनी बहनों को कहें, अगर आपकी बहन की शादी भी हो गई है फिर भी कहिए कि तुम्हारे पास ये डिग्री है, तुम ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर सकती हो, ये कोर्सेज तुम कर सकती हो, ये तुम काम कर सकती हो। गिव हर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसको कम से कम आप ताकत दीजिए। तीसरी बात, मैं एजुकेशन सिस्टम के बाद तीसरी बात जो है कॉलेज के कंडीशन पर उठाना चाहता हूं। इस बात को मंचों से स्वीकार करना पड़ेगा आपको, हमको और सबको कि बिहार की वास्तविक स्थिति क्या है, लेकिन उसमें दिन प्रतिदिन सुधार भी हो रहा है। जितने भी लोग सरकारी शिक्षक में अभी भर्ती हुए हैं, मैं उन पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता हूं, नहीं तो ये रील कट के वीडियो वायरल हो जाएगा और फिर मेरे ऊपर 2-4 मुकदमे कर दिए जाएंगे। मैं इस बात से डरता हूं थोड़ा बहुत सार्वजनिक मंचों पर बोलने से, लेकिन इस बात को समझिए कि आप जहां जाएं अपनी ऊर्जा के साथ जाएं। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के अंदर में आप बीकॉम करना चाहते हैं, भाई इस बात को समझिए कि हर जगह, एक अमेरिका से सर ने एग्जांपल दिया कि अमेरिका से लोग नौकरी छोड़कर फिशरीज कर रहे हैं, लेकिन सर ये भी बात सच है कि फिशरीज तो कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग उसमें सफल हो पा रहे हैं, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। कितने लोगों के पास वो संसाधन है। आप इन बच्चों को कहें जिनको बैंक लोन देने से भगा देती है, आप उस पीड़ा को कैसे झेलेंगे? जब ये युवा पीढ़ी जाती है बैंकों में प्रोजेक्ट लेकर तो कहते हैं कि तुम्हारे पास मॉर्गेज रखने को कुछ है क्या? तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना दी है छात्रों को, तो वो छात्रों के लिए जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसे गवर्नमेंट के सपोर्ट स्कीम्स आए जहां पर अगर वो लड़के रोजगार में नहीं जा रहे हैं तो स्वरोजगार को अपनाएं और उनको सहायता सरकार दे। ये एक पहल हो सकती है, ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसे देखा जा सकता है। साथ ही साथ पढ़ाई करने पर आता हूं भाई, मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं। आप आज के बाद जीवन में जब भी इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें, मैनेजमेंट पढ़ें, अकाउंटेंसी पढ़ें, बिजनेस स्टडीज पढ़ें, करंट इश्यूज पढ़ें, इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ें, एनी सब्जेक्ट यू रीड अपॉन, आप कुछ भी पढ़ें, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आज के बाद किसी परीक्षा विशेष के लिए पढ़ाई को बंद कर दीजिए।
अगर आप जीवन में, मैंने अपने जीवन की मैं आपको पाठ बताता हूं, मैंने कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करी है। अजीब सा आपको लग रहा होगा, फिर इतनी सारी सरकारी नौकरियां कैसे कर ली और ये जो भी अचीव किया वो अलग है। मैं इंडिया के एक बहुत बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा एजुकेटर था। मैं सबसे ज्यादा पैसे लेता था, घंटे के हिसाब से 50,000 रुपए से ऊपर लेता पढ़ाने का। मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाना हूं कि कभी भी मैंने किसी परीक्षा विशेष के लिए तैयारी नहीं करी है और आपसे भी यही अनुरोध करूंगा। आप ठीक है, आप एक एमबीए की डेवलपमेंट मैनेजमेंट की आप डिग्री ले रहे हैं, लेकिन अपने आप को इनके बेड़ियों में बांध कर मत रखिए। मैं आपसे कहता हूं कि आप थोड़े बिगड़ेल रहिए। आप चाय के नुक्करों पर बैठिए, क्योंकि चाय के नुक्करों पर जब दोस्तों के साथ आप डिस्कशन करते हैं तो वो जो डायमेंशनल अप्रोच आपको मिलता है, वो जो खुलापन मिलता है, वो शायद बंद कमरों में आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कभी भी अपने आप को परीक्षा विशेष के लिए तैयार मत कीजिए, हमेशा विषय विशेष के लिए पढ़िए, आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास को एक बार विषय के रूप में पढ़ लीजिए, चाहे वो फिर परीक्षा सिविल सेवा की हो, चाहे वो किसी भी परीक्षा हो जहां इतिहास पूछे जाते हैं, आप उन प्रश्नों को बना पाएंगे। आप अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आपको अगर पता नहीं, मुझे नहीं पता आपको अकाउंट्स के सिलेबस में क्या है, लेकिन हम लोग स्कूलों में इंटरव्यूज वगैरह होता था तो मॉक में पूछते हैं कि मॉक इंटरव्यू के अंदर में सवाल की गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, डेबिट द क्रेडिटर वाली जो कहानी है वो एक कहानी। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप जिन विषयों को पढ़ें, आपके सिलेबस में जो पार्ट है, आप उसको इतनी रमता के साथ पढ़ें, क्योंकि याद रखिएगा जब आप बड़े हो जाएंगे 5 साल 7 साल के बाद, आपको ये क्लासरूम याद आएगा, आपको ये आपके प्रोफेसर्स याद आएंगे। जब आप जीवन में सफल होंगे तब भी याद आएंगे, ताकि आपकी ललक होगी कि इनसे जाकर मिलें और सर को और कॉलेज को ये बताएं कि सर देखिए हम आपके यहां से पढ़ के निकले हैं और जीवन के आज इस मुकाम पर खड़े हैं। और जब आप सफल नहीं होंगे तब भी ये कॉलेज और ये क्लासरूम याद आएगा, इसलिए याद आएगा कि आपको प्रोफेसर्स ने, आपको आपके लेक्चरर्स ने बहुत सारी नसीहतें दी थी, आपने उनको अंडर पास कर दिया और आप वहां चूक गए, आज आपको उसकी कमी खल रही है। मेरे दोस्त, इस पोडियम पर खड़ा होकर बोलने के लिए कई बरस लग जाते हैं उस कुर्सी से इस कुर्सी पर चढ़ने के लिए। कितनी ऊर्जा लगती है, कितना डर होता है। आपके कहीं से कोई सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रोफेसर इतना इनबिल्ट होते हैं कि वो कहीं से आपके क्वेश्चंस को काउंटर कर सके। तो इस बात को मैं आपसे जाते जाते यही कहना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जाते जाते ये कहना चाहता हूं कि करियर डेवलपमेंट पे प्रोग्राम है, लास्ट 2 मिनट और बोलूंगा, लेकिन बस इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आपके शिक्षकों के द्वारा, आपके प्रोफेसर और आपके लेक्चरों के द्वारा जब भी कोई लाइफ गिविंग लेसन आपको बोले जा रहे हो, कभी जीवन का कोई पर्याय बताया जा रहा हो कि जीवन में आप इन बातों का ध्यान रखें, तो उसके लिए एक छोटी सी पतली डायरी जरूर रखें। मैं अपने स्कूल में, मैं अपने कॉलेजेस में, मैं कोटा रिटर्न भी हूं, मेरे पिताजी ने मुझे कोटा भी भेजा था पढ़ने के लिए। मैं ऑल इंडिया में फिजिक्स में हाईएस्ट नंबर था आईआईटी जेईई के अंदर में, लेकिन मैथ में मेरा 23 नंबर आया था, मैं फेल कर गया। तो उस समय रेजोनेंस में आरके भी सर हुआ करते थे, वो बताते थे कि ये जो कूट होता है ना, पीछे वाला कूट देहाती भाषा में बोलते हैं, जब भी कोई टीचर मुझे कोई बात कहता था जो लाइफ लर्निंग लेसन होती थी, तो मैं इन कूटों पर लिख दिया करता था। और याद रखिएगा, जब 2 साल में 3 साल में आप एमबीए करके निकलेंगे और आप अपने कूटों को बटोर कर अगर उसको डायरी बना लेंगे, जीवन में फिर किसी गुरु की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके प्रोफेसर द्वारा क्लास में दिए गए लाइफ लेसन आपके लिए वो जीवन का लेसन होगा, इस बात को याद रखिएगा। दुनिया में सिर्फ 2 लोग बने होते हैं, दुनिया में सिर्फ 2 लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे आगे जाएं, एक आपके माता पिता और दूसरे आपको पढ़ाने वाले आपके टीचर्स होते हैं, जो ये हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे निकले। मुझे बहुत सारे स्टार्टअप्स के अंदर में काम करने का मौका मिला, मैं बहुत सारे फंडिंग राउंड्स में गया, मैंने बहुत सारे पिचिंग्स की, मैं पिचिंग्स के लिए एक्सपर्ट माना जाता हूं। लोग कहते हैं कि शशि सर जहां खड़ा होकर पिच कर देंगे तो वो फंड उठा के चले आएंगे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्त, पिचिंग या कहीं भी किसी भी सार्वजनिक मंचों पर खड़े हो तो आप इस बात को याद रखें कि आपके पास कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है। कॉन्फिडेंस आपकी क्लास में सीखी गई बातें, आपके सार्वजनिक मंचों पर सीखी गई बातें, ऐसे ऐसे ऑडिटोरियम्स में जब कोई प्रोफेसर आते हैं, संख्या की उपस्थिति कम है, कुर्सियां खाली हैं, मुझे कोई बात का गुरेज नहीं है, लेकिन इस बात को मैं निश्चिंत हूं कि जो कुर्सियां भरी हुई हैं, जब वो ऑडिटोरियम से बाहर निकलेंगे तो इन खाली कुर्सियों पर जो लोग बैठने वाले थे उनसे ज्यादा कहीं प्रबुद्ध होगी, उनसे ज्यादा कहीं ज्ञान अर्जन करके जा रही होगी और उनसे ज्यादा कहीं ऊर्जा लेकर के जाएगी, ये मुझे इस बात का भरोसा है। मैं आपको एक दो तरफ और लेकर जाना चाहता हूं, करियर अपॉर्चुनिटीज की। भाई, डेस्टिनी में जो तुम्हारे लिखा है, जो आपके लिखा है, वो आपको मिलेगा, मिलेगा। जब मैं किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, 2019 का वो दौर था, तो मेरे पास कई गुना के ऑफर, 2.5 गुना के ऑफर आते थे कि 3 करोड़ ले लो सालाना, 2 करोड़ ले लो, ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते थे। एक बार मैं अपनी माँ के पास बैठा हुआ था, जब मैं ये भाषण दे रहा हूं तो मेरी माँ सबसे बुरे दौर से अपने जीवन के गुजर रही है। मुझे पटना में शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको उस बात को याद दिलाना चाहता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मेरी मां मुझे कहा करती थी कि तुम्हारे जीवन में, भोजपुरी में बोलती थी कि तारा अगर किस्मत में
अगर घर लिखल बा 35 साल की उम्र में तो घर तारा बन जाई। तू पान के दुकान चलावा, तू हेया काम करो चाहे हो जा काम करो, बेटा कोई के साथ गद्दारी मत करिए, जहां काम करत रहो जा मन लगा के काम करो। तो जो स्विच करने वाली दुनिया है कि यहाँ 5,000 रुपए यहाँ तनख्वाह में ज्यादा मिल रहे तो वहां स्विच कर जाए, 10,000 रुपए वहां तनख्वाह में भी ज्यादा मिल रहा है, या आप जिस संस्था से बचपन से जुड़े हैं, आपने जहां पहली अपनी जॉब ली है अपॉर्चुनिटी के रूप में, जहां उसको जोड़ा है, आप उस संस्था से हृदय से जुड़ते हैं। बाकी जगह किडनी और फेफड़ा आपका जुड़ता है, हृदय नहीं जुड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए आगे आप जब यहां से निकल के जाएं और जिन संस्थाओं में जाएं, मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर, जिन संस्थाओं में आप जाएं उन संस्था में याद रखें कि जो गुण आपको डीएमआई ने दिया है, जो यहाँ के प्रोफेसर्स ने आपको सिखाया है, वो सब अपने साथ समेट कर लेके जाए। और करियर अपॉर्चुनिटीज पे मैं बोलते बोलते डेविएट हो गया, मैं एक लाइन आपको कहना चाहता हूं कि आपकी जहां चाह है मेरे दोस्त, वहां आपके लिए राह हमेशा खुली रहेगी। मेहनत पर भरोसा करिए, अपने आप पर भरोसा करिए, आप जिंदगी में जरूर सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए, जीवन के किसी कोण पर मिलेंगे, फिर हंस के आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू शशि सर। सुधीर सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे। डीएमआई के सारे शिक्षकगण और जो नॉन शिक्षक स्टाफ हैं उनको भी, मंच पे बैठे हुए पैनलिस्ट और विद्यार्थीगण, मीडिया वाले लोग, सबको मेरा नमस्कार। इतने ओजस्वी भाषण के बाद कुछ बोलने के लिए शायद बचता नहीं है। तो मैं वापस आता हूँ। मेरा फील्ड मैनेजमेंट का है और लॉ एंट्रेंस का है, तो हम ये दो फील्ड में विद्यार्थियों का तैयारी कराते हैं। तो हम लोग थोड़ा धरातल पे उतरते हैं, नीचे आते हैं। सर ने बहुत उड़ा दिया है, तो नीचे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हम एक आपको दूसरी दुनिया की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसमें आप भी हैं, लेकिन उस हद तक ना हो तो उधर ले जा रहा हूं। हम आगे 10 साल 15 साल के बाद जिस दुनिया में जा रहे हैं, शायद हम लोग उसकी कल्पना भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। एआई का वर्ल्ड 15 साल के बाद कैसा होगा, डीप मशीन लर्निंग का वर्ल्ड कैसा होगा, और कितने जॉब्स जाएंगे और कितने नए जॉब जुड़ेंगे, क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने होंगी, और सरकारी नौकरी रास्ता होगा, स्किल डेवलपमेंट रास्ता होगा, स्वयं को कैसे उबारेंगे। तो हम आइसोलेशन में नहीं रहते हैं, हम एक दुनिया में रहते हैं, और उस दुनिया में भारत की भूमिका बहुत अहम है और बिहारियों की भूमिका भारत में बहुत अहम है। तो इस चुनौतीपूर्ण विश्व में अगर हमें और आपको आगे बढ़ना है और एक सशक्त भारत और बिहार का निर्माण करना है, तो हम उस एनवायरनमेंट को अलग करके नहीं देख सकते हैं। सरकार कितनी नौकरियां देंगी और कितने सालों तक देगी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो और मुझसे जो बताया गया था कि सर जीविका के माध्यम से बहुत सारे लाइब्रेरी है, वहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो कुछ सीख पाए, यहाँ से उनको कुछ मिल पाए, तो तभी मैं ये आतिथ्य स्वीकार किया था। क्योंकि मैंने बोला मैं तो एंट्रेंस का तैयारी कराता हूँ और आपके यहाँ तो पीजीडीएम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, वो तो मेरे से आगे वाले लेवल पे हैं। तो सर ने कहा कि नहीं, वो आपके बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो गांव में बैठे हुए हैं, उनका अगर मार्गदर्शन हो सके तो देखिए, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जर्नी है, ये करोड़ों से लाखों, लाखों से हजारों और हजारों से सैकड़ों के बीच की है, और मेरा कोई तरीका नहीं है। जो अपॉर्चुनिटीज है उसी को हमें लेकर के चलना है। उदाहरण स्वरूप अगर मैं बोलूं कि 10th और 12th का एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों की संख्या देखेंगे तो करोड़ों में है, लेकिन सीयूईटी के नाम से आप लोग वाकिफ होंगे। अगर उसका यूजी देखें तो पिछले साल 28 लाख विद्यार्थियों ने उसका फॉर्म भरा था पूरे इंडिया से, यूपी सबसे बड़ा रहा। तो समझने वाली बात है कि अगर हमारे गांव के बच्चे, कल ही आया है सीयूईटी यूजी का फॉर्म अगले साल के लिए, मई में एग्जाम होगा। अगर वो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हो, तो जो भी 12th पास कर रहे हो या 12th में हो, मेरा तुमसे निवेदन है कि तुम सीयूईटी यूजी का फॉर्म भरो और
उन लोगों में आ जाओ, 28 लाख लोगों में आ जाओ जो करोड़ों से लाख में अपने आप को ले आओ और उस दिशा में तैयारी करो, प्रयत्न करो। और अगर आप किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में चले जाते हैं तो अगला 3 साल जो आपका बीतेगा उसका परिवेश आपके उस गांव के परिवेश से कहीं बेहतर होगा। तो अगर हम कदम धीरे 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 बढ़ाएं तो हम ना सिर्फ अपनी मदद कर पाएंगे, कल अपने समाज की मदद कर पाएंगे। जैसे आप लोगों के लिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। कॉर्पोरेट में तो सब लोग जा रहे हैं, लाखों का सैलरी पा रहे हैं, जैसे सर बोलते हैं 1 घंटे का मिलियंस में कमाते हैं। बट हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, लौट के क्या आ रहे हैं? तो आपका आपका जो कॉज है, जो मुझे पता चला कि आप में से ज्यादातर लोग ब्लॉक में लौट के जाएंगे, वहां डेवलपमेंट ऑफिसर या क्या क्या नाम है मुझे उतना पता नहीं है, आप कुछ उन जगहों पे काम करेंगे। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आज की जरूरत है, आज का डिमांड है, नीड है, इसको करने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मखाना पिछले साल पटना में 500-600 रुपए किलो बिक रहा था, तो इस साल 900-1000 रुपए किलो है। और इसकी सुपर फूड में गिनती होती है मखाना की। और मखाना मिथिलांचल का बहुत कुछ है और इसको जीआई टैग आपको लीची को मिल चुका है, मखाना को मिल चुका है। और एक्सपोर्ट क्वालिटी अगर हम करें तो हम लोग हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और ये सोशल इंजीनियरिंग और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से बिल्कुल संभव है। हाँ, आपकी पढ़ाई उसकी मार्केटिंग करने में बिल्कुल मदद करेगी, ब्रांडिंग करने में मदद करेगी, फंड लाने में मदद करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में सरकार से अपील करने में मदद करेगी। तो शायद आप मेरी बातों से इत्तेफाक रख रहे हो। तो उसी तरीके से एक सीयूईटी की मैंने बात की, दूसरा आपका है क्लैट एग्जाम। 22, एक दो नहीं, 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उनके एडमिशंस के लिए 12th स्तर पे ये एग्जाम होता है, हर साल होता है। और सिर्फ उन्हीं में एडमिशन नहीं होता है, देश भर के नामी गिरामी बाकी विश्वविद्यालयों में भी लॉ की पढ़ाई होती है। और लॉ का अब संबंध उससे नहीं रह गया है कि लोग लिटिगेशन कर रहे हैं, काला कोट पहन के केस लड़ रहे हैं, नहीं। तो उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। ज्यादातर लोग बड़े बड़े फॉर्म्स में काम कर रहे हैं, लॉ फॉर्म्स हैं, उनके द्वारा हायर कर लिए जाते हैं कॉर्पोरेट के द्वारा। और वो वहां पे आप भी जैसे जैसे मैनेजमेंट करने के बाद एक आपको ऑफिस मिलता है, उसमें बैठ के काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उनको मिलता है। तो उन गांव के विद्यार्थियों से मेरा अपील है कि तुम ज्यादा से ज्यादा जानो कि आईआईटी और मेडिकल के अलावा तुम्हारे पास न्यू एज करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो तुम्हारे पास सीयूईटी है, एक अच्छा तरीका हो सकता है। क्लैट का मैंने बात किया, ये हो सकता है। क्लैट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एलेट होता है, एलसैट होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट में एक और एग्जाम होता है आईपी मैट, जो कि 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें बीबीए और एमबीए दोनों की डिग्री मिलती है। ये आईएम इंदौर ने शुरू किया था। आईएम इंदौर के बाद आईएम बोध गया, आईएम रोहतक, आईएम जम्मू और आईएम रांची भी इसमें शामिल है। अगर आप कॉर्पोरेट की तरफ रुख करना चाहते हैं और कॉर्पोरेट की तरफ जाना चाहते हैं तो ये सब रास्ते आपके सामने अभी उपलब्ध हैं। फिर ग्रेजुएशन के बाद आप कैट दे सकते हैं, चैट दे सकते हैं, स्नैप दे सकते हैं, एनमैट दे सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम है इंडिया में, सी मैट दे सकते हैं, बहुत सारे लोग मैट भी देते हैं, जिसके थ्रू आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा सकते हैं। कॉर्पोरेट में जाना है तो यहाँ का बिल्कुल अलग तरीका है। मतलब जो सरकारी नौकरी के लिए है कि रटो रटो, आप जितना रट सकते हो, लिख सकते हो और उसको जाके एग्जाम में वोमिट कर सकते हो, जी नहीं। यहाँ तो आपसे पूछा जाएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू डू एमबीए, व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, what you have done, where you have taken help from others, where you have helped others, what you have done for the society and how it has affected you and it has affected positively the society. So इस तरह के सवालों से आप रूबरू होते हैं। तो मेरा अनुरोध है उन विद्यार्थियों से कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले जो हमारी यात्रा है, ये जीवन जो है ये एक यात्रा है। और यात्रा क्या है? स्वयं को खोजने का, डिस्कवरिंग योरसेल्फ, अपने आप को पाना है। और किसी को भी लग सकता है तो हम तो हैं ही सामने, तो मुझे खुद को पाना क्या है?
अपने स्ट्रेंथ को पाना है, अपने वीकनेस को, बहुत लोग अपने वीकनेस नहीं बता पाते हैं, स्ट्रेंथ बताना शुरू करते हैं तो जरूरत से ज्यादा बता देते हैं। तो कितना सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका कितना डेवलप्ड है। तो दूसरों की जय से पहले स्वयं विजय करे। तो सबसे पहले आता है कि स्वयं के बारे में बात कीजिए। और जो मैंने मशीन लर्निंग और एआई की बात की, इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जिस तरीके से ले ऑफ हो रहा है, आपको पता ही होगा, गूगल ने कितने लोगों को हटाया और बाकी सारे कंपनियों ने कितने लोगों को हटाया और क्यों उनके जॉब जा रहे हैं। तो ये एक चुनौतीपूर्ण वातावरण है और बिल्कुल मैं सरकारी नौकरी और सरकारी वाली बात नहीं करूंगा। तो इसमें जो तैयारी होगी वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस कॉन्फिडेंस की सर बात कर रहे थे वो कॉन्फिडेंस आवश्यक है, परंतु आपको स्वयं का बोध होना होगा। आपको एक सोशल कॉज की समझ होनी चाहिए, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं और यही क्यों करना चाहते हैं और इसमें आज तक आपने क्या किया है। आपका सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज नहीं देखा जाता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर का वेटेज है, आपने स्पोर्ट्स में कितना अच्छा किया है, आपके पास सर्टिफिकेशन कितने हैं, आपने इंटर्नशिप कितना किया है, आपने सिंपोजियम कितने ज्वाइन किए हैं, आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च सेमिनार्स कितने अटेंड किए हैं। तो ये एक अलग दुनिया है और बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि दुर्गेश सर के लिए समय कम मिलेगा, तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। दुर्गेश सर से नाउ रिक्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले मंच आसीन मेरे पूर्वे साहब, मेरे मित्र अशोक सर, मेरे भाई शशि शरण और मेरे मित्र सुधीर जी, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोग और भारत के भविष्य के कर्णधार, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। इस मंच से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, मुझे सुनने के लिए। साथ ही साथ इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, उन सभी लोगों को मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि वो लोग ऐसे ही समाज को दिशा दशा देने के लिए नया प्रयास करें। सेमिनार का जो विषय है वो बड़ा व्यापक और प्रभावकारी है। उसमें लिखा गया है कि कैरियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटी इन बिहार। आज हम सभी लोग इस पर मौजूद हैं, इसलिए लेकिन ये संस्था जो है इसका नाम है डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, DMI के प्रांगण में हम लोग उपस्थित हैं। और इसके एक बड़ा सुंदर सा चीज है जहां से मैं अपने लेक्चर का प्रारंभ करूंगा कि सुविद्या सुविनियोग सुविकास। शायद हो सकता है कि प्रत्येक दिन इस चीज को आप लोग देखते होंगे, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा। मैं ये कैसे कहूं कि नहीं पता होगा, लेकिन यही है मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें लिखा गया है सुविद्या सुविनियोगात सुविकास, अर्थात विद्या का सही उपयोग, सही विनियोग, सही सामंजस्य, सही क्रियान्वयन ही प्रबंधन है। और वही प्रबंधन का जो वास्तविक प्रयोग है वो अवसर है। अब चलते हैं हम लोग अवसर से शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा है अपॉर्चुनिटी। अवसर है क्या, सबसे पहले ये जानना होगा। जिसे हम लोग अवसर कहते हैं, हर जगह अवसर अवसर की बातें होती है, ये अवसर है क्या? तो अवसर का सामान्य अर्थ है मौका, तरीका, रास्ता, वे, प्रक्रिया, प्रतिबद्धता और तार्किकता। और ये प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र है, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना के दूसरे पैरा में लिखा है कि इनके समस्त नागरिकों को हम समान अवसर की स्वतंत्रता देते हैं। ये अवसर की स्वतंत्रता का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नहीं, आपकी मन का
और दूसरे आर्टिकल यहाँ 16 में लिखा हुआ है कि अवसर सभी लोगों को बिना भेदभाव का मिलेगा। इसका अर्थ है कि अवसर में भेदभाव नहीं होगी। और दूसरा, अवसर मन की होगी। अब एक बात बताइए, जब मन की होगी तो क्या हर आदमी का मन एक है या अलग अलग है? तो हर आदमी का मन अलग अलग है, इसलिए अवसर भी अनेक अनेक होगा। आपके मन में जो है वही अवसर है। अब यहां सवाल है कि मेरे मन में क्या है, तो हमें यही परखने में बरसों लग जाते हैं। यही कारण है कि हम मैट्रिक से लेकर के जिंदगी के तमाम आयाम पर यह सोच ही नहीं पाते हैं कि मैं करूं क्या। और जब तक ये नहीं तैयार करेंगे कि मैं करूं क्या, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला ये सोचना होगा कि ये अवसर जो है, ये अवसर बहुआयामी है। अब यहाँ सवाल है कि जिसको हम लोग सामान्य रूप में कहते हैं, मैं एक बार छत्तीसगढ़ में ऐसे ही प्रोग्राम ले रहा था और उसमें अनएम्प्लॉयमेंट पर बातें थी। तो एक बच्चा बोला, मैंने पूछा अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहा, तो कहा कि जिसको सरकारी नौकरी नहीं है वो बेरोजगार है। ऐसा ही मुझे याद है, रायपुर में वो प्रोग्राम था और वो कहा कि जिसको सरकारी नौकरी नहीं है वो बेरोजगार है। हमारे शशि भाई बहुत कुछ बोल दिए हैं, आप लोगों के गर्मी भर दिए हैं, लेकिन यहाँ सवाल है कि हमें उस वास्तविकता पर भी आना है, सोचना है। क्योंकि सब लोग मुझे बाद में समय दिए हैं, तो मुझे तो सार गर्भित करते करते फिर जोश में भी आना है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि अवसर क्या है। तो समझिए कि अवसर एक मौका है, और वो ऐसा नहीं होता है कि एक बार चले जाने के बाद दोबारा नहीं आता है। जैसे बहते हुए पानी में हम एक ही बार कदम रखते हैं, ठीक उसी तरह से ऐसा मौका नहीं है। मौका हमेशा आता है। 60 वर्ष के जीवन में भी अपने जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए जो जुगाड़ करते हैं, उसी का नाम स्टार्टअप है, उसी का नाम मैनेजमेंट है। जिंदगी को मूल्यवान बनाने के लिए जो भी आप जुगाड़ लगाते हैं, जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, वही है स्टार्टअप। आप जहां शुरू करेंगे वही जो है सो स्टार्टअप हो जाएगी। अब यहां पर है कि फिर प्रबंधन क्या है। तो प्रबंधन है कि एक विकल्प को सैकड़ों विकल्प में बदल करके एक बना देना, यह है प्रबंधन। आप लोगों की तरह ही एक बच्चा बड़ा मेहनत कर रहा था, ईश्वर प्रसन्न हुआ, उसे पूछा कि तुमको क्या चाहिए, मैं एक वरदान दूंगा। अब वो बच्चा परेशान हो गया कि मैं क्या मांगू, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, बच्चे भी नहीं है, माता पिता अंधे हैं। अब मैं ऐसा क्या मांगू, किसके लिए वर मांगू? तो यहाँ विकल्प क्या है, एक, कि आपको एक ही मांगना है। समस्या कितनी है हमारे पास, बहुत सारी समस्याएं हैं कि मैं मांगू क्या, अपने लिए घर मांगू या माता पिता के लिए मांगू या बच्चे के लिए मांगू। वो जरा असमंजस में पड़ गया। ऐसा था कि उसको रास्ते में एक डीएमए के प्रोफेसर मिल गए। कहा, बच्चा नाराज क्यों हो इतना? तो कहा, क्या कहें, बड़ा समस्या में है, हमारे ऊपर ईश्वर प्रसन्न तो हो गए हैं, लेकिन कहें एक ही वरदान मांगिए, लेकिन समस्या अनेक है। कहा, क्या है? तो कहा, ये सारी समस्याएं हैं, इसका समाधान कैसे करें? तो उसमें हमारे पूर्वे साहब दिया में कहे, इसी के लिए, छोटी सी बात के लिए तुम इतना परेशान है? कहा, सिर्फ एक रास्ता है। कहा, क्या? तो ईश्वर को जाना और कहना, जो मैं बताता हूं उतना ही मांगना। कहा, ठीक है, वही मांगेंगे, बताइए तो आप सही। तो कहा कि वहां जाना, कहना कि हमारी माता पिता की इच्छा है कि हम अपने आंखों से सोने के कटोरी में सोने के चांदी चम्मच से जो है सो हम अपने पोता को खाते हुए देखें। अब बताइए, इसमें सारे समस्या समाधान है या नहीं है? तो क्या इसको प्रबंधन मांगेंगे कि नहीं मानेंगे? अब ये बताइए, किसी किताब में लिखी है? ये किसी किताब में लिखा गया है? अगर किताब से ज्ञान होता और किताब से विद्वान होता तो अकबर महान नहीं होता। मूर्ख था वो, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसको लिखने नहीं आता था। और मैं हमेशा कहता हूं, मैं सही कहता हूं, मैं 22 साल का जो है सो एसडीएम दिया हूं। आज आप, मैं इस पर सार्वजनिक मंच है नहीं बोलना चाहता हूं, बिहार का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां मेरा एसडीएम और डीएसपी काम नहीं करता है, चाहे आपका पटना हो या कोई भी 38 जिला में, हर जगह। और वो ऐसा नहीं कि बूढ़े लोग सब 22 साल 25 साल पहला चांस, इसलिए इंटर से उसका प्लान करिए।
तो चलिए मैं उस सब पर आऊंगा, प्राइवेट ये सब कुछ, क्योंकि मेरा अब तो मेरा सारा समय मेरा है और आप लोग भी मेरे हैं, इसलिए मुझे कुछ सीख कर जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम आपके और आप हमारे होंगे, क्योंकि उससे हमको बिहार बदलना है। बिहार है तो बहार है, अगर बिहार बदलेगा तो दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि अखिल भारतीय राजनीति की शुरुआत बिहार से हुई थी। अकेला चाणक्य पूरा देश बदल दिया था, और आज तो पटना की धरती पर कई चाणक्य हैं। तो बदलाव तो स्वाभाविक है ना, क्या गलत कह रहे हैं? तो इसलिए अब बताइए, ये मैनेजमेंट है या नहीं है? क्या किसी किताब में लिखी रहेगी? नहीं। तो बेटा, किताब सिर्फ सूचना देता है, उसका प्रयोग आप कैसे करेंगे, यही है प्रबंधन। और ये तरीका सबका अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, कैंटीन हॉल में गए थे, ढेर सारा वेराइटीज था, पनीर का वगैरह का वगैरह का वेराइटी, और इस वेराइटी के एक्यूमुलेशन और इस वेराइटी का प्राकृतिक उपयोग, इसी को कहते हैं सतत। क्योंकि जब मैं आया तो आपके लेटर पर एक लिखा हुआ था इनोवेशन और सतत। सतत का मतलब होता है ऐसा संसाधन जिसका प्रयोग हम हमेशा करें। इसीलिए जीवन में अगर बेहतर करना है तो 3 चीजों को ध्यान रखना है। पहला भोजन, क्योंकि इससे बनता है अन्न। मन, जैसे खाए अन्न वैसे होवे मन, और जैसी पढ़े किताब वैसी होवे बुद्धि। मेरे भाई बोल चुके हैं कि चुटका पढ़ेंगे चुटका ज्ञान आएगा। अब यहाँ सवाल है कि इस डिजिटल दुनिया में चुटका के अलावा कोई विकल्प क्या है? क्योंकि डिजिटल दुनिया पर हमारे भाई बहुत कुछ बोल चुके हैं, लेकिन सवाल है कि क्या मैं इस व्यवस्था से दूर रह सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये दुनिया आज की वास्तविक दुनिया है, आज की दुनिया है। सिर्फ इसके तरीके हमें बदलना है। हमें बच्चे को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रखनी है। हमारा कर्तव्य होता है कि हमारा बच्चा कौन सा कंटेंट ले रहा है ये देखें। हम कंटेंट से दूर नहीं रख सकते हैं, बहते हुए हवाओं से हम पीठ नहीं मोड़ सकते हैं। सिर्फ हम उसे यह सिखा सकते हैं कि कितने एंगल से मोड़ें कि हम उसको ऊर्जा में बदल दें। हम बहती हुई हवाओं से ऊर्जा उत्पन्न करें, हम अपने बच्चे को ये सिखाएं। इसलिए तकनीक से दूर नहीं रख सकते। तकनीक हमारा आज की जरूरत है, उस जरूरत में केवल लेने की आवश्यकता है। और कहा जाता है कि प्रत्येक चीज अगर महत्वपूर्ण है और आवश्यकता से अधिक लिया जाए तो खतरनाक है, चाहे वो खाना ही हो या चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। इसलिए आवश्यक रूप में उसका प्रयोग करिए तो वो चीजें होगी। इसीलिए भोजन से बनता है अन्न, किताब से बनती है बुद्धि, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका दोस्त। क्योंकि आप जिसके साथ रहेंगे वैसा बनेगा आपका चरित्र। अगर चरित्र नहीं बदलेगा तो संस्कार नहीं बदलेगी, संस्कार नहीं बदलेगा, परिष्कार नहीं बदलेगा, परिष्कार नहीं बदलेगा तो फिर आपकी आबो हवा नहीं बदलेगी, आप दुनिया नहीं बदलेंगे। इसलिए ये बदलना है तो ये 3 चीज को हमें बदलना होगा। अब चलते हैं हम लोग अवसर पर। तो अवसर 2 तरीके से होगा। एक, या तो किसी के द्वारा बनाए गए अवसर पर आप चलें, तो किसी के द्वारा बनाए गए अवसर पर जो चलते हैं उसी का नाम है सरकारी नौकरी। बड़ा सुरक्षित है, कोरोना काल में खूब चला। नौकरी में सरकारी नहीं तो तरकारी, क्योंकि इस दोनों में रिसेशन नहीं आता है। क्या रिसेशन होगा कभी? अब यहाँ सवाल है कि जिसको हम लोग सतत जॉब कहते हैं वो क्या सब हो सकता है आपके लिए। तो वो आपके लिए शिक्षा होगा, वो आपके लिए अन्य होगा, वो आपके लिए स्वास्थ्य होगा, वो आपके लिए पर्यटन होगा, वो आपके क्षेत्रीय विकास होगा, वो आपका जो है भौगोलिक परिवेश होगा, वो आपका डिजिटल दुनिया होगा। इतना सारा विकल्प है। अब यहाँ पर सवाल है कि फिर दूसरा क्या विकल्प है? तो दूसरा विकल्प है कि आप स्वयं अवसर क्रिएट करें, और जो स्वयं अवसर क्रिएट करते हैं उसका नाम है प्राइवेट। अब यहाँ पर सवाल है कि प्राइवेट अवसर पर समस्या क्या है? तो 3-4 समस्या है। सबसे पहले है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। तीसरा, हमारे पास जो है दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। चौथा, हमारे पास जो है सामाजिक मनोविज्ञान नहीं है। तो आज मैं आपको कहता हूं कि आपकी पूंजी भी हो सकती है, आपके पास सब कुछ आ सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा चीज लड़ना है आपको वो ये कि सामाजिक मनोविज्ञान की बिहार में आज भी स्वीकृति नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ पर औद्योगिक घराने और उद्यमशीलता का विकास नहीं हो पाया है। क्योंकि आज भी कोई भी माँ बाप सरकारी नौकरी छोड़ करके प्राइवेट को अपनी बच्चियां नहीं देते हैं। वो पहले पूछते हैं कि नौकरी है कहाँ है, तो लड़की का शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
अब आप बताइए साइकोलॉजी बदलेगा? तो फिर सवाल है कि इस साइकोलॉजी में मैं अपने आप को क्या करूं? तो सबसे बड़ा चीज है कि आपको यह सोचना होगा कि हम जिस रास्ते से चलेंगे वही रास्ता कल सबका बनेगा। अगर ये आपके लिए साहस है तो आप कोई भी चीज सुधार करेंगे, कुछ भी चीज बन सकते हैं और कहीं जा सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास है कि हम प्राइवेट सेक्टर में जब जाते हैं तो सबसे बड़ा चीज है सरकार की भी उसमें बातें होती है। आज मान लीजिए कि स्वास्थ्य में देखेंगे, लोगों को विश्वास किस पर है, सरकारी पर या प्राइवेट पर? नहीं। आज आप कभी भी जो है सो पीएमसीएच में नहीं जाएंगे, आप तुरंत डोलेंगे मेदंता हॉस्पिटल, एम्स में जाना चाहेंगे, जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको ट्रस्ट है। इसलिए नहीं कि वो पटना में है, इसलिए है कि वो दिल्ली वाला एम्स है। जी वही बात जो पटना में है। तो इसका मतलब क्या देखे हम लोग कि हमारा ट्रस्ट हमें वो ले जाता है। और आज ठीक उसी तरह से जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो प्राइवेट में आते हैं लेकिन सरकारी में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है। याद रखिए, किताब पढ़ करके सिर्फ सूचना ली जा सकती है, उसका प्रयोग नहीं सीखा जा सकता है, और प्रयोग सबका अलग अलग होता है, और वही प्रयोग जो है मूल्यवान बनाता है। एक ही जो है सो सब्जी जो है मौर्या लोक में भी मिलते हैं, एक जो है ठेला पर मिलता है। पनीर की सब्जी, दोनों में पनीर का आइटम एक रहेगा, लेकिन पनीर का ग्रेडियंट और वेरिएशन दोनों अलग अलग होगा। इसलिए पढ़ते वक्त में आप तरीका डेवलप करिए, किसी के बनाए हुए तरीके आपके लिए कारगर नहीं होंगे। आप कितना भी पढ़ लेंगे, किताब से केवल सूचना लेंगे, तरीका अपना नहीं बदलेंगे, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो नौकरी की तलाश करेंगे, अन्यथा नौकरी आपके पास आ जाएगी। अगर आप अपना तरीका बदलेंगे तो आप जो भी काम करेंगे वहां पर अवसर क्रिएट हो जाएगा। आज चलिए अब बिहार की बात है, तो बिहार में सैकड़ों अपॉर्चुनिटियां हैं। सबसे पहले मैं जिस क्षेत्र में हूं उसका नाम ले लूं, क्योंकि मैं सिविल सेवा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो याद रखिए कि दुनिया में और भारत में अगर सबसे अच्छी नौकरी है तो सिविल सेवा है। तो हम सभी लोग बैठे हैं और अल्टीमेट सभी कामों के लिए जिसके पास जाते हैं वो केवल सिविल सेवा होता है। अगर किसी का कुत्ता खो जाता है तब, या किसी का पत्नी खो जाता है तब जाता है लोग उसी अधिकारी के पास। हिंदुस्तान का जितना भी बड़ा से बड़ा निर्णय होता है वो सब लेता है सिविल सेवा। और पढ़ने की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे कम पढ़ता है सिविल सेवा। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि एक सिंपल ग्रेजुएट होने के बाद आपको पूरी जिला दी जाती है, जबकि उसी जिला में अगर दुनिया सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर सबसे अधिक पढ़े होते हैं, लेकिन उस पूरे हॉस्पिटल का निर्णय वो मात्र 22 वर्ष का बच्चा ले रहा होता है। वो बच्चा नहीं है, उसके पास मैनेजमेंट का गुण है। कहा जाता है कि मैकाले से जब कहा गया कि ऐसा सिलेबस क्यों बनाते हैं, तो वो कहता है कि जो इतने सारे विषय को मैनेज नहीं कर पाएगा वो पूरे व्यवस्था को क्या कर मैनेज कर पाएगा। इसीलिए आज हमारे हिंदुस्तान में अगर नौकरी में कुछ बात करेंगे, सिविल सेवा को छोड़कर बाकी सब के सब नौकरी है, बाकी वो शहंशाह है। अब सवाल होता है उसका जवाब क्या है, तो उसका जवाब है सिर्फ आपका ये स्टार्टअप और आपका स्टार्टअप और स्टार्टअप। आप ऐसा बदल दीजिए कि वो डीएम आपको सुरक्षा देने के लिए दौड़ जाए और कोई नहीं है, क्योंकि नौकरी से केवल आप अपने जीवन की भरपाई कर सकते हैं, स्टार्टअप से अपनी लाइफ स्टाइल और दुनिया बदल सकते हैं, और सारी व्यवस्था आपके पीछे दौड़ सकती है। बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब यहां पर सवाल है कि पढ़ाई को जो है नौकरी से जोड़ा कौन? तो पढ़ाई को नौकरी से जोड़ा हमारी अंग्रेजी सरकार, क्योंकि उसको यहां पर नौकर पैदा करना था। इसीलिए वो कहना शुरू किया, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब जरा बताइए कि नीरज चोपड़ा दुनिया का सबसे इंटरनेशनल पर्सनालिटी है या नहीं? वो तो तीर ही फेंकता है, तो क्या वो खराब हो गया? सारा आपके जिला में आ जाएगा, पूरा डीएम एस्कॉर्ट करेंगे, एसपी एस्कॉर्ट करेंगे। क्या बताइए वो सामान्य पर्सन है या इंटरनेशनल पर्सनल है? क्या वो किताब पढ़ा है या भाला फेंका है? अर्थात आप जो भी काम करिए उच्च कोटि का करिए, आप पूरे समाज में आ जाएंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि केवल किताब पढ़ने से ही नौकरी होगा। आप दुनिया में स्मार्टनेस सीखिए कि हम उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे और वो व्यवस्था हो जाएगी।
अब यहाँ सवाल है कि जब तक आज आप इसलिए पढ़ेंगे कि हमको नौकरी मिले, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। मेरे भाई बोल चुके हैं, बहुत सुंदर बात बोले हैं ये, मैं इनके बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आदमी पढ़ता इसलिए है क्योंकि उसको लगता है नौकरी हो जाए। अब यहाँ जरा सोचिए, नौकरी के लिए जब आप पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे? आप हमेशा ये खोजेंगे कि मैं क्या पढ़ूं कि जो है सो मुझे नौकरी हो जाए। आप ज्ञान के लिए कभी नहीं पढ़ते। अगर ज्ञान के लिए पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ सीख जाएंगे जो आपके लिए ढेरों अवसर क्रिएट करेगा। आप जो कुछ भी करेंगे उसमें अच्छा करेंगे। आप मखाना भी बेचेंगे तो अच्छा करेंगे। जहां अवसर नहीं है वहां भी अवसर क्रिएट हो, यह है प्रबंधन। इसीलिए प्रबंधन जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका सामान्य अर्थ है विशेष को अति विशेष बना देना, यह है प्रबंधन, और कोई काम नहीं है। कम से कम में अधिक बनाना, यह है प्रबंधन। उच्च कोटि की क्षमता को डेवलप करना, यह है प्रबंधन। तिनके से जो है हथियार बना देना, यह है प्रबंधन। अनस्किल्ड को स्किल्ड बना देना, यह है प्रबंधन। बालू से जो है सो बारूद बना देना, यह है प्रबंधन। बात समझ गए? इसीलिए प्रबंधन एक स्किल्ड है, प्रबंधन एक योग्यता नहीं है, केवल विषय वस्तु नहीं है, वो एक कौशल है। जरा एग्जाम्पल चलिए, मान लीजिए आप लोगों को पता होगा कि राम खाली हाथ गए थे, कुछ था साथ में क्या? लेकिन जो चीज मिला उसी को साथ लेकर के उसको पोटेंशनाइज किए। तो आप अपने संसाधनों को कैसे पोटेंशनाइज करते हैं, यह है प्रबंधन। और आप इस संस्था में, डीएमए में, आप यही सीखते हैं कि आपके पास लोएस्ट से लोएस्ट रिसोर्स को हम मैक्सिमम तक कैसे पहुंचाएं, ये आपको सिखाया जाता होगा अपने विज्ञजनों के द्वारा। मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा और कुछ सिखाया जाता होगा। क्या आप मेरे बात से आप लोग सहमत हैं? विज्ञ लोग यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर लोग बैठे हैं, पढ़ाते होंगे क्या? तो क्या यही सिखाते हैं ना बच्चे को कि आप कम से कम चीजों को बेहतर कैसे करें? बेटा एक बात याद रखिए कि सभी प्रकार के उपलब्ध संसाधनों में अपने आप को अच्छा रख पाना, यह सामान्य बात नहीं, ये सामान्य है। लेकिन असामान्य में सामान्य रहना, ये उच्च प्रबंधन का काम होता है। एग्जाम्पल लीजिए, संपूर्ण विश्व ये जान रहा था कि कोरोना के काल में हम लोग डैमेज हो जाएंगे। WHO घोषणा कर चुके थे कि भारत कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन दुनिया कोलैप्स कर गई, भारत जिंदा रहा। क्यों? तो उच्च प्रबंधन के कारण। और वो अगर उच्च प्रबंधन का गुण आप सीख लें तो आपके चारों तरफ अवसर ही अवसर है। आप वाल्मीकि नगर अभयारण्य से ले जाइए, वहां पर्यटन में अवसर है, आप वहां स्टार्टअप कर सकते हैं। काम करने का तरीका बदलिए। आज आपने चाय सुट्टा बार का नाम सुने होंगे, करोड़ों का जो है सो उसका रिवेन्यू है, जिसके मोदी जी जो है सो खुद उसका नाम लिए हुए हैं, आप नाम सुने होंगे। अब एक बात बताइए, पहले क्या होता था? चाय वाला, तो चाय वाले के दिमाग में हमारी साइकोलॉजी में कंसेप्ट क्या बना हुआ था? फटा हुआ धोती, बेंच जो है बांस वाला, मैला कुचेला जो है कोयले पर जलता हुआ धुआं में बनता हुआ चाय। और आज क्या कंसेप्ट है? 50 इंची के LCD पर चलता हुआ कैटरीना कैफ, बगल में बैठा हुआ सोफा, उस पर जो है सो सुट्टा और चाय की ढेर सारी वेराइटी डेवलप कर लिया हम। पहले चाय का मतलब होता था चाय लीकर, अब चाय का मतलब नहीं, मसाला चाय, डोसा चाय, कॉफी चाय, अदरक चाय, इलायची चाय, फला चाय, ये क्या है सो बताइए? ये वैरायटी है। तो नेचर हमें वैरायटी देता है, उस नेचर के वैरायटी को आप कैसे एक्सप्लोर करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट। यही है अवसर। ये आप सीखिए, ये आप करिए, आप हर जगह जो करेंगे आप उसमें अच्छा करेंगे। चलिए जाते जाते आपको एक सुंदर सा बात, सुंदर सा प्रसंग सुनाता हुआ जाऊं, जो जीवन में आपको याद रहेगा। आप जो भी काम करें उसमें उच्च करें। एक बार की बात है, एक आप लोगों की तरह ही युवक, जैसे आज सारे प्रोग्राम हुआ है इसलिए क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद है कि मैं आप लोगों को यह बता सकूं कि आप अपने जीवन में करेंगे क्या। क्या हम लोग यही नहीं इसीलिए उपस्थित हुए हैं? लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि जीवन में आप यह क्या करेंगे, ये इस पर निर्भर करेगा कि आप क्या करेंगे। इसीलिए आपके ही उदाहरण देते हैं। एक आप जैसे व्यक्ति कबीर दास के पास पहुंचे, कहे बाबा मैं क्या करूं, मैं संन्यास ग्रहण करूं या मैं गृहस्थ बनूं, मैं शादीशुदा हो जाऊं या संन्यास हो जाऊं?
उन्होंने कहा कि कल जवाब देंगे। अगला दिन जब बच्चा आया, उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दिए, 12 बजे का दिन था, और कहे कि अरे सुन रही हो, थोड़ा दीपक जलाकर लेते आना। बच्चा बैठा हुआ था सामने, उनकी पत्नी दीपक जला करके उनके सामने बगल में रख दिया और चली गई। जरा वो सोचने लगा कि 12 बजे दिन में ये जो है सो कपड़ा बिन रहे हैं बाबा, इनको अभी दिए की क्या जरूरत है। और इससे भी ज्यादा पागल तो ये है कि दिया जलाकर रख दी और चली गई, एक बार भी नहीं पूछी कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। आज की रहती तो पक्की पूछते हैं लोग। फिर उसको साथ में लिए चले गए एक टीला पर। टीला पर एक 80 साल का बूढ़ा रहता था। बातचीत के क्रम में बाबा पूछे आपका उम्र क्या है, तो 80 वर्ष। फिर चलते चलते पूछे क्या उम्र है, 80 वर्ष। नीचे उतरे, बोले, फिर बुलाए उसको, बाबा को। बाबा दौड़ता हुआ आया, कहा बाबा आपने अपना उम्र नहीं बताया। तो बेटा बताए तो थे, आप भूल गए होंगे, 80 वर्ष। बाबा चले गए। कबीर बोले बेटा आप जीवन में कुछ भी करें, चाहे गृहस्थ बने या सन्यास बने, अगर सन्यास बने तो ऐसा जिसमें क्रोध ना हो, 5 बार पूछने के बाद भी। और अगर गृहस्थ बने तो विश्वास ऐसा हो कि 12 बजे दिन में भी दिया पूछा जाए तो कहा नहीं जाए क्या करेंगे। इसलिए बेटा आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आदर्श बनिए, और अपना एक तरीका जब डेवलप करेंगे, आदर्श बनेंगे, तो पक्का उसमें अच्छा करेंगे। आज हमारे पास ढेरों अपॉर्चुनिटी है। आज स्त्री पुरुष संसाधन की समस्याएं खत्म हो चुकी है। केवल आपकी तलाश की जरूरत है। आप जहां कदम बढ़ाएंगे आपको सब कुछ मिल जाएंगे। आप आईएएस बनना चाहेंगे, आईएएस बनना चाहेंगे, आईपीएस बनना चाहेंगे, क्लैट में जाना चाहेंगे या इसमें जाना चाहेंगे, या फिर आप स्टार्टअप करना चाहेंगे, हर जगह पर प्लेटफॉर्म है। ये आपका चयन है कि आप क्या करते हैं। चलते हैं हम लोग। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया। इन सभी पैनल की तरफ से मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं डीएमए को देर बधाई देता हूं कि वो ऐसे ही समाज के नवनिर्माण में अपनी भूमिका अदा करते रहें और हम लोगों को भी ऐसे ही बुलाते रहें। इसके लिए धन्यवाद। हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन ओपन करेंगे कि आपको अगर किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मैं राकेश हूँ और जीविका में काम करता हूँ। सबसे पहले तो परिचय करा दूँ, जो बच्चे आए हैं वो जीविका लाइब्रेरी से आए हैं। तो जीविका ने पिछले साल जो है 32 जिले के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र की स्थापना की, जिसका स्वामित्व संचालन जो है वो जीविका दीदियों द्वारा ही किया जाता है। और जीविका लाइब्रेरी की खासियत है कि यहाँ पे 50 से 60 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। जो क्यूबिकल नुमा जो बैठने की व्यवस्था आप शहरों में देखते हैं वैसी व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं। जो है 1000 लगभग किताबें हैं, अलग अलग कंपटीशन और उसके इतर भी, और डिजिटली भी वो इक्विप्ड है, डिजिटल क्लासरूम और जो है कंप्यूटर, वो सारी चीजें हैं। और इन लाइब्रेरी में रोजाना जो है जो एवरेज फुटफॉल है वो अभी 70 से 80 है। 7 से 8 हजार बच्चे इन लाइब्रेरी में, इन गांवों की जो लाइब्रेरी है इसमें आते हैं, और लगभग 1 से 1 सवा लाख बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं जो अलग अलग बैचेस में आते हैं। तो जो पिछले दिनों का हम लोग का अनुभव रहा है कि जो उच्च शिक्षा का क्षेत्र है, आप जैसे सर बता रहे थे कि अभी हम लोगों ने सीयूईटी पीजी की, उसके लिए जो है जो दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू के ऐसे स्टूडेंट वॉलंटियर के माध्यम से वेबिनार किया, जिसमें इन सभी 100 लाइब्रेरी से जो है 50-60 हर जगह बैठे थे बच्चे, उन्होंने लाइव सुना उनको कि क्या कैसे सीयूईटी का फॉर्म भरना है, क्या अपॉर्चुनिटी है। डीएमआई के सौजन्य से हम लोगों ने जो है मैनेजमेंट के क्षेत्र में क्या हायर एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटी है, जिसको प्रोफेसर पूर्वे सर और इन्हीं जीविका लाइब्रेरी के 4 बच्चे जो पिछले साल उन्होंने वो वैसे बच्चे हैं, आप अगर उन यहाँ पे उपस्थित है वो जो हिंदी मीडियम सरकारी विद्यालयों से पढ़े हैं, बहुत गरीब परिवारों से आते हैं
और मैट जैसी परीक्षा के बारे में पहली बार उन्होंने सुना। और उन्होंने जब यहाँ से जब हम लोगों ने हिम्मत दिया तो उन्होंने फॉर्म भरा। और बहुत धन्यवाद डीएमआई का कि उनकी जो फीस थी वो जो ट्यूशन फी वो 100% जो है वो उन्होंने वेव ऑफ की, जिसकी बदौलत जो है, जो कहते हैं कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। तो ये 100 लाइब्रेरी जो है सर, इसके माध्यम से जो हायर एजुकेशन में जो एस्पिरेशन का इशू है, कि आकांक्षा ही नहीं, कि सपने देखने की जो हिम्मत होनी चाहिए। अभी हम लोग मैट के लिए लोगों को जो है वेबिनार के बाद प्रेरित कर रहे हैं। हम लोगों ने सीएनएलयू जो है, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के माध्यम से वेबिनार किया। बच्चे तो जुड़े, 4000 5000 बच्चे आए, पर जब पहली बार हम लोग उन लोगों ने कहा कि आपको फॉर्म भरना, उसके लिए 4000 रुपए लगेगा आपको, मैट का फॉर्म भरना है आपको 2100 रुपए लगेगा। तो पहली नाकाबंदी इनके सपनों पे है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है सर, वहां पे। दूसरी नाकाबंदी जो आपके ध्यान में मैं लाना चाहूंगा सर, इवन एस्पिरेशन बिल्डिंग के बाद जो है, जो तैयारी को लेके जो संसाधन है, तो जीविका लाइब्रेरी के माध्यम से हम लोग सर जो है अभी डीएमआई का मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैट के लिए जो है इन्होंने जो चारों हमारे प्रोफेसर शशि, प्रोफेसर श्रीधर मैडम है, प्रोफेसर पूर्व, इन चारों ने वॉलेंटियर करते हुए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इनके लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस, जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं या भरना चाह रहे हैं, तो उसकी तैयारी के लिए इस तरह से वो जो है उनको मदद कर रहे हैं। तो ये है कि जो पूरा हायर एजुकेशन के जो के लिए जो प्रवेश परीक्षाएं हैं, जो देश भर के 20-25 प्रवेश परीक्षाएं हैं, वो आईटीआई से लेकर आईआईटी तक, नीट तक के, और इसके बाद जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं नौकरियों के लिए, सिपाही से लेके भर यूपीएससी तक का। तो कैसे गांव के बच्चे जो हैं, गांव में रहते हुए जिनके पास संसाधन नहीं भी हैं, वो इन जीविका लाइब्रेरी के माध्यम से जो किताबें वहाँ पे उपलब्ध हैं, बैठ के जो है पढ़ने की जगह उपलब्ध है। सोमवार से लेके इतवार तक जो है सुबह 9 से 5, मतलब 8 घंटे का भी शेड्यूल जो है वो बैठ के वहाँ पे वो लाभ ले रहे हैं। और इसमें जो है अब हमको लगता है जो पैनलिस्ट बैच है, उनसे मैं एक्चुअली परिचय के साथ एक अपील भी करना चाहूँगा। ये जो बच्चे हैं, ये डिजिटली वहाँ पे ये सभी 100 लाइब्रेरी इक्विप है, और इस साल और ऐसी सरकार द्वारा जो है 500 लाइब्रेरी, हर ब्लॉक में एक-एक लाइब्रेरी, और आने वाले समय में जो है हर ब्लॉक में 3 से 4 ऐसी लाइब्रेरी जो जीविका दीदी द्वारा जो है वो संचालित होगा। और उनके द्वारा आपसे ये अपील होगा कि सर, कि इसमें जो है कैसे आप जो है वॉलंटियरली जो है इन बच्चों की मदद करना चाहे। अगर मान लीजिए कोई बच्चा इन 100 लाइब्रेरी से 5-5, 10-10 बच्चे जो हैं वो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको कैसे मार्गदर्शन मिल सकता है। कोई अभी सर जो क्लैट के माध्यम से अभी इस साल, तो अगले साल के लिए जो बच्चे मान लीजिए इच्छुक थे सर, और इस साल तैयारी करना चाहते हैं, क्या उनको जो है वॉलंटियरली किसी माध्यम से हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। जो सर बता रहे थे कि बाकी जो और भी जो गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, आप देख रहे हो कि फॉर्म भरता तो सब है, लेकिन परीक्षाओं में जो पास करने हैं उनका आप अगर फैमिली बैकग्राउंड देखें तो मतलब गांव में जो है आप देखेंगे कि ये धारणा है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको गांव तो छोड़ना होगा, आपको शहर जाना होगा। शहर जाने का मतलब है रहने, खाने, कोचिंग, वो तमाम 10,000 से 8,000 का खर्चा है सर। तो इन लाइब्रेरी के माध्यम से ये सपना सफल हुआ सर, कि कई बच्चे जो शहरों में थे वो वापस गांव लौट के गए। हमारे साथ विद्या दीदी हैं, 4 विद्या दीदी हैं जो जो है इन लाइब्रेरी को संचालित करती हैं डे बेसिस पे। ये अभी आपको बताएंगी कैसे गांव के बच्चे जो हैं वो शहर लौट के आ रहे हैं। तो अंत में वही अपील है कि ये कैसे इन जो है ये पूरा इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है सर, कि गांव के जो रूरल एरिया के जो एडोलसेंट है, जो यूथ है, इनके करियर डेवलपमेंट का, कि हायर एजुकेशन के जितने भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उस पे हम लोग उनका एस्पिरेशन बिल्डिंग से लेके जो एक्सेसिबिलिटी को लेके जो भी बैरियर है, वो चाहे फाइनेंशियल हो, प्रिपरेशन को लेके उसमें किस तरह से समर्थन हो सकता है, उसको लेके हमको लगता है हम सभी चारों पैनलिस्ट पे जो है अपील करना चाहिए। थैंक जी 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 जी। बस एक सर अंत में मैं बच्चों से अपील करना चाहूँ कि आप जो इस पैनल के बाद आपके जो भी प्रश्न आप उसको लिख लें, और जी, जी। आप एक-एक करके अपनी बात जरूर रखें। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे हैं और आपके आँखों में बड़ा सपना है। हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं कि आपका सपना साकार हो, और उसके लिए डीएमआई, हम सभी लोग जो यहाँ आए हैं,
कि वो साकार होने में जो भी बाधाएं हैं उसे हटाया जाए। अब यहाँ सवाल है तो उसको जो आपका अपना व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो उसको लिख लिया जाए, चूंकि ये चीजें हैं। अब यहाँ पर है कि सिविल सेवा, पहले नौकरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है नौकरी, और नौकरी होता है। देखिए, अगर आप नौकरी के लिए पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो नौकरी होता है। आपको शशि जी भी बताएं, मैं भी आपको बता रहा हूं कि पढ़ना जो है अलग बात है और पास करना अलग बात है। कुछ लोग पढ़ते बहुत हैं, पास कम करते हैं, कुछ लोग पढ़ते ही नहीं हैं, पास कर जाते हैं। तो फिर सवाल होता है क्या वो नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग होता है। हर एग्जाम के अपने अपने तरीके हैं। आपको वो तरीका केवल समझ में आ जाए, आप रिजल्ट दे देंगे। मान लीजिए कि अगर हम सिविल सेवा की तैयारी करें और हमारे पास, तो सबसे पहला ये सोचना होगा, सिविल सेवा जब भी आपके मन में हो कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कलेक्टर बनना है, डिसीजन मेकिंग में जाना है, रजिस्ट्रार बनना है, निबंधन में जाना है, तो आपको सबसे पहले सोचना होगा कि इस ऑफिसर बन करके मैं करूंगा क्या। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर बनेगा तो उसको पता है कि मैं रोग का इलाज करूंगा, इंजीनियर को पता है कि मैं जो है सो मकान बनाऊंगा, ये सारा काम करूंगा, तोड़ जोड़ करूंगा। तो आपको सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचना होगा, जैसे आपने नौकरी डिसाइड किया कि मुझे सिविल सेना में जाना है, तो मुझे करना क्या है। तो सिविल सेवा के रूप में आपका काम होता है केवल निर्णय लेना, और जो भी निर्णय दिया गया उस पर काम करना है। तो आपको अपने अंदर में डिसीजन मेकिंग डेवलप करना है, और उसी डिसीजन मेकिंग को डेवलप करना जो है सो आपको सीखना पड़ता है, वो डेवलप नहीं होता है। डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन है। जैसे कि मान लीजिए हमको खाने का मन होता है, और कभी मन होता है कि खाएंगे तो फिर कैसे पढ़ पाएंगे, नींद आ जाएगी, अब खाएं अभी या नहीं खा पाएं। तो सिविल सेवा की तैयारी जब करेंगे तो आपको डिसीजन सीखना पड़ेगा, और इस डिसीजन के लिए आपके आसपास के विषय वस्तु पर जो क्षमता है वो डेवलप करना होगा। अब सवाल होता है ये गुण होगा कहाँ से? तो ये गुण जो डेवलप हो जाता है जनरली, ये 9th-10th से शुरू करता है लोग, लेकिन 11th-12th करने के बाद से अगर आप इसको डेवलप करते हैं और ग्रेजुएशन खत्म होते होते आप 22 साल में बन जाएंगे, ये हमारा गारंटी है। अब यहाँ सवाल है कि इससे जुड़े कैसे। इसके लिए जैसे उन्होंने बोला कि डिजिटल, तो डिजिटल माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप, मेरा संस्था है श्रेय आईएएस के नाम से है, आप यूट्यूब पर भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो श्रेय आईएएस का ऐप है, वहाँ से आप जा करके उसको पढ़ सकते हैं। और आप सभी लोगों के लिए वो सारा एजुकेशन फ्री है। देखिए, बिहार वो चीजें हैं जहां आज एजुकेशन का बयार है। पहले वो जमाना था कि हम फलाने जगह जाएंगे तभी हमारा ज्ञान होगा। ज्ञान जो होता है अपने आसपास में छुपा होता है, आप उसको ले सकते हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। जैसे सिविल सेवा की तैयारी का आप फॉर्म भरेंगे तो बिना ग्रेजुएशन किए आप नहीं भरेंगे, लेकिन तैयारी जो इसकी शुरू करेंगे आप 12th से शुरू कर दीजिए। आप 12th से जैसे ही पास करेंगे आप उसको शुरू कर दीजिए। आपके अंदर में केवल लेखन शैली होना चाहिए, विषय वस्तु पर आपका सही अप्रोच होना चाहिए, अपने आसपास जो घटनाक्रम घट रहा है उस पर एक दृष्टिकोण होना चाहिए, जो सबका अलग अलग है। प्रत्येक दिन हम अपने आसपास एक घटना देखते हैं, उस घटना पर आप अपना एक केस स्टडी तैयार करिए, एक दृष्टिकोण डेवलप करिए, धीरे धीरे डेवलप होगा। सीखना जो होता है वो डेवलप किया जाता है, पढ़ करके सिर्फ सूचना लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ सवाल है, आपके मन में जो सवाल होगा वो आप करिए। तो लाइब्रेरी हमारे हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं। एक बार आपके पास माइक है ना, जो सवाल पूछा था आपने, आप अपना एक बार परिचय दीजिए। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आप किस पद पर हैं, आप क्या संचालित करते हैं और किस प्रकार से। मैं आपकी भावनाओं को समझ चुका हूं, मैं उतनी देर से बैठा हूं, मैं एक बार मेरा नाम राकेश है और मैं जीविका में बतौर यंग प्रोफेशनल जो है कार्यरत हूँ पटना में। यंग प्रोफेशनल, यंग प्रोफेशनल जीविका हर साल जो है जो देश भर के अलग अलग मैनेजमेंट के, सोशल वर्क के जो प्रीमियम कॉलेज है, वहां से हमारे जैसे युवकों को जो है। आप कहाँ, किस कॉलेज से आप पास आउट? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से हूँ। मूलतः मैं बिहार के ही भागलपुर जिला का रहने वाला। बहुत सारे लोग टिस वाले भी आके यहाँ ज्वाइन टिस करते के लोग होते हैं, डीएमआई के लोग होते हैं, तो इस तरह से अब हर मेरा साल दूसरा सवाल आपसे है कि ये जो लाइब्रेरी का संचालन हो रहा है, इस लाइब्रेरी में कौन से लोग आते हैं? क्या वो जीविका के, जैसे दो चीजें हैं, मेरी बात, मेरे प्रश्न समझिएगा। मैं आपके प्रश्न को बखूबी समझ चुका हूं, मैं एक लाइन में उसका उत्तर दूंगा, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि जो जीविका की आपकी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में क्या वैसे ही लोगों के बच्चे आके पढ़ते हैं जिनके माता पिता जीविका से जुड़े? क्योंकि जीविका का जो होल
सोल है, जो दोनों thought तरह process के है। लोग हैं, एसएचजी और नॉन एसएचजी दोनों तरह के हाँ, लोग। तो अब देखिए जो एसएचजी वाले लोग हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि नॉन एसएचजी पे हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, बिकॉज हम उनको नहीं मानते कि वो जीविका के, चूंकि जीविका का मतलब ही है कि जो उसके सोल मेंबर्स हैं। जीविका का कॉन्सेप्ट इंडिया में एक अजूबा कॉन्सेप्ट था जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है बिहार के अंदर में। तो जीविका में हम उन पर बात कर रहे हैं, अभी आपसे बता रहे हैं, हम उन पे बात कर रहे हैं जो जीविका के रजिस्टर्ड मेंबर हैं या इनके जिनके माता पिता जीविका से जुड़े हुए हैं। आपका जो प्रश्न था वो मैंने देखा। अब दूसरी तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट्स हैं वहां पे, वो किन तरह का प्रोफाइल पाते हैं, किन चीजों की वो तैयारी करते हैं? उसमें मोस्टली जो है, जो अभी हमारा फुटबॉलिंग है, उसमें आप हाई स्कूल के लोग जो 8 9th में है, 10th में है, वो 11 12th में है, इसके बाद आपको ठीक, ग्रेजुएशन वाला मैं समझ मोस्टली, गया, मतलब क्योंकि मैक्सिमम मिडिल जो स्कूल। मेरा अपना एनालिसिस है, मेरी एक जूनियर जो है कोयल दास थी, वो जीविका में काम कर रही थी। शी वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्पोर्ट पे यहाँ पे, जब वो सर हुआ करते थे। अभी चेंज होने के बाद 2 लोग चेंज हो गए उनके पास, साउथ इंडिया नाम था, मुझे ध्यान नहीं है, रविंद्रम या जो जीविका के डायरेक्टर हुआ करते थे इसके बाद, क्या नाम था सर? बाला मुरगंडी। हाँ, बाला मुरगंडी सर। तो कोयल का रिप्लेसमेंट हूँ मैं। अच्छा, आप कोयल के जगह हैं, ठीक है। कोयल मेरी जूनियर रही है, अभी वो फ्रांस में है, उसकी शादी हो गई है और वो फ्रांस चली गई, तो मेरी वो जूनियर है एंड आई नो हर वेरी वेल। तो ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले इसके ऊपर काम किया है, उसका बहुत रिक्वेस्ट था मेरे पास और मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करा था, लेकिन वो बीच में चूंकि मैं उससे थोड़ा लिंक आउट हो गया था, इस वजह से वो चीजें पीछे रह गई थी। फिर संजय सर आ गए थे जीविका में और फिर उनका भी अभी तबादला हो गया था। मेरी बात हुई थी तो पता चला था कि वो जनवरी में छुट्टी पे थे, दिसंबर में छुट्टी पे थे, उसके बाद उनकी ट्रांसफर हो गई। मेरा सवाल ये है आपसे कि हमने जो स्टडी करा था जीविका के ऊपर, तो जीविका के प्रोफेलेक्टिवली में जो चीजें निकल के आई थी फिल्टर होके, उसमें मैक्सिमम क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं जो उन दीदियों के बच्चे हैं। 12th की संख्या भी जो है, 12th के बच्चों की जो संख्या है वो भी मात्र और मात्र 15% वेरी कर रहा था, और 85% जो है, जो मैट्रिक के, बिहार बोर्ड के मैट्रिक के बच्चे होते हैं उनकी है। ठीक है, तो आप जो सवाल पूछ रहे थे, आप आई थिंक वो डेटा आप जो कह रहे हैं वो अलग संदर्भ है। वो टर्न द बस करके एक ऐप है जिसमें 10 12 का ऐप ठीक डिजिटाइज है, है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन तो उन्हीं का है। आप देखेंगे तो मोस्टली इसमें जो है, आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे आपको और अंडर ग्रेजुएट के बच्चे मिलेंगे। चलिए, अब आपका सवाल था कि आप लोग क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो आपने 2 तरीके से घुमा के पूछा था। मैं सार्वजनिक मंच से ये घोषणा करता हूं कि साल में प्रत्येक वर्ष जीविका के जो रजिस्टर्ड लोग होंगे उनमें 50,000 विद्यार्थियों की जिम्मेदारी हमारी संस्था की होगी। जो हम फीस पैसा लेके पढ़ाते हैं वो हम आपको एक कोड दे देंगे आपके जीविका के, लेकिन वो रजिस्टर्ड मेंबर होने चाहिए। और पूरे बिहार में, ये डीएमआई के मंच से है, लेकिन मैं चाहूंगा कि डीएमआई का इसमें एमओयू रहे, इस तरह का कोई प्रावधान हो। सार्वजनिक मंचों से घोषणा है, 50,000 छात्रों की जिम्मेदारी हमारी है। मैट्रिक की परीक्षा में जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, आप ये 50,000 का कैप जहां से बढ़वा लें। आप चाहते हैं कि हमारे 25,000 लोग मैट्रिक के यहाँ तैयारी करा दें, उनको उनके जो क्लासेस हैं उनको निःशुल्क रूप से घर पे बैठे दे दे, हम वो फ्री में देने के लिए तैयार हैं। हम एक कूपन कोड आपको दे देंगे, वो कूपन कोड आप डालेंगे, वो आपको 0 ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। बाकी लोग अगर खरीदेंगे तो उनको 5-7 हजार रुपए लगेंगे, वो हम निःशुल्क अपनी संस्था की तरफ से आपको दिला देंगे। लेकिन आप इस बात का बखूबी ध्यान रखें कि किसी भी संस्था अगर इस तरह की कोई भी कामों करने के लिए आगे आती है तो उनका मनोबल इस बात से ना टूटे कि आप इसका दुरुपयोग करवा रहे हैं। आप इस बात को समझिएगा। हमने इसके पहले इसी के ऊपर काम किया था, तो हमें ये अंदेशा बार बार लग रहा था कि इसका किसी पर्सनल यूज में यूज ना हो जाए, तो वो इंटरवेंशन ना हो। बाकी 50,000 विद्यार्थियों की आपकी संस्था जो है, हमारी संस्था जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। आप एमओयू के थ्रू हमारी संस्था से रजिस्टर्ड है, हम भी लिमिटेड है, तो हम जो है आपसे एमओयू करके हम आपको जीविका को हम 50,000 लोगों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। 50,000 लोग मैट्रिक और इंटर वाले मिला के, जिसमें लड़कियों का 50% रिजर्वेशन होगा, 50% हिस्सेदारी लड़कियों की। अगर लड़की आपके पास 20,000 जुटा तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो रजिस्टर्ड। और एक 10,000 लोग जनरल कंपटीशन के, उससे ज्यादा भाई हमारी क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारा अपना संसाधन का खर्च होता है और चूंकि इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है। तो जनरल कंपटीशन के जो लोग हैं, जो बिहार से दरोगा, जैसे भी बिहार शिक्षक भर्ती है, उसमें ऑफिसर एकेडमी आपके गांव गांव में पहुंचा हुआ होगा, तो बिहार शिक्षक भर्ती है, बिहार दरोगा है, बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है, या बिहार सरकार या अन्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनके लिए 10,000 विद्यार्थियों के लिए जीविका रजिस्टर्ड मेंबर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमारी तरफ से आपके लिए रहेगा। आप जो मांग रहे थे हमने खुले मंच से इसको दे दिया है। आप इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन रेडी कराएं, हम लोग उसको साइन करके आपको ओवरहेडेड कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये जिम्मेदारी आप जैसे युवाओं के कंधे पे हो कि इसका दुरुपयोग ना हो, इसका सदुपयोग हो, ताकि सभी शिक्षक अपना योगदान इस संस्था में दे पाए। ठीक है, जीविका के लिए बहुत दिनों से चल रहा था, चूंकि कोयल को आप जानते हैं, कोयल जूनियर रही है हमारी, इसलिए जब आपने पहचान लिया तब मैं आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
मैं चूंकि क्लास का टाइम होता है, उससे ऑफ टाइम में प्रोफेसर से बात हो जाएंगी। पॉलिटी जो सब परीक्षा में पूछी जाती है, सिस्टम पॉलिटिकल साइंस तो है, पॉलिटी वगैरह सब कंपटीशन के लिए, उस पर मेरी लेक्चर 1 माह में 4 से 5 दिन सर अरेंज कर देंगे, मैं उस पर लेक्चर दे दूंगा। और पॉलिटिकल साइंस अभी नए सिलेबस पर पूरे बिहार में मेरी ही किताब आई है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी पर, वह जो 4 ईयर कोर्स है, तो उसमें कम से कम अपने पब्लिकेशन से कहकर हम 25-25 कॉपी 50 कॉपी सर को उपलब्ध करवा देंगे, किताब वह उपलब्ध करा देंगे। और मेरी पूरे बिहार में वह सब सिस्टम, चूंकि मेरे पास सही सिस्टम नहीं, सर सिस्टम अगर उपलब्ध कराएंगे तो सप्ताह में 1 दिन, किसी दिन 2 दिन मैं लेक्चर दे दूंगा, और उसको इंटर 10+2 वाले को हो जाएगा, और फिर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट एडवांटेज ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू। जितना भी मैंने नाम लिया, चाहे वो मैनेजमेंट का यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, और लॉ एंट्रेंस का हो, चाहे वो यूजी हो या पीजी हो, तो जैसे सीयूईटी हो गया, आईपी मैथ हो गया, क्लैट हो गया, एमबीए एंट्रेंस के जितने भी एग्जाम्स हैं, हालांकि हम लोग मैट नहीं पढ़ाते हैं, हम मैट को हम इतने दोयम दर्जे का समझते हैं कि उसकी तैयारी ही नहीं कराते हैं। और विडंबना देखे कि आप मैट के लिए किसी को तैयार कर रहे हैं, और कोई मेरे यहाँ मैट के लिए आए तो हम लोग बोलते हैं मैट देकर के क्या मिलेगा, कोई अच्छा कॉलेज मैट के थ्रू नहीं है। मतलब है, लेकिन हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो मैं आपके सवाल के जवाब पे आता हूं कि सबसे पहली बात है अवेयरनेस की। आप जैसा जान रहे हैं कि आईआईटी, मेडिकल, सर लोग का जो सिविल सर्विसेज है, वो सबके कान में सदियों से गूंज रहा है, जनरेशन बाय जनरेशन वो आ रहे हैं। बट मैनेजमेंट और लॉ का फील्ड, जैसा हमने कहा, न्यू एज करियर ऑप्शन है। ज्यादातर लोग तो जानते ही नहीं है, उनको ऑप्शन ही नहीं पता है, और एक थोड़ा महंगा भी है, ये भी एक इशू है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें पहले हम लोग एक एक कर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। पहले अवेयरनेस प्रोग्राम लाते हैं, जब भी एग्जाम कब होता है, एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, कौन एलिजिबल है, क्या क्या उसके अंदर पूछा जाता है, वो गाइड करना। फिर उससे संबंधित किताबों के बारे में बात करना या रिसोर्सेज के बारे में बात करना कि आप कहां से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, किसका कितना इंपॉर्टेंस है। जो सर लोगों ने कहा, कि दुर्गेश सर ने खास करके कहा कि हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न नेचर होता है, वो आपको समझना होगा। और उसको बेहतर समझने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से अच्छा कुछ होता नहीं है। तो हम लोग फिर सेकेंड स्टेज में प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करके उनको बताएंगे। वहां से नॉलेज गैप समझ में आता है कि एग्जाम यहां है और हम यहां हैं, और हमारे और एग्जाम के बीच में इतने का गैप है, वो गैप को कैसे भरे। तो गाइडेंस करके और उन बच्चों को बता के, और टाइम टू टाइम, अब वो महीने में 2 दिन हो कि 4 दिन हो कि कैसे हो, उनसे फिर फीडबैक लेना कि तुमको जो दिया गया था पढ़ने के लिए, तुमको क्या डिफिकल्टी आ रही है, तुम उसको पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो। तो उस तरह से उनको एक सतत गाइडेंस दिया जा सकता है। सर लोगों की तरह मेरे साथ थोड़ी समस्या है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में कोचिंग देते हैं, और हमारे यहाँ जो ऑनलाइन क्लास होता है वो हैदराबाद हमारा हेड ऑफिस है, वहीं से होता है। क्योंकि वो स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो वो चीज वो वहीं से एक ही जगह से होता है। तो उसके लिए तो अगर कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके लिए मुझे एचओ से बात करना होगा, उनको मेल करना होगा। तो वो मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। अपने व्यक्तिगत पर्सनल कैपेसिटी में मैं इतना कहूंगा कि गाइड करने के लिए जब भी मुझे प्रोफेसर सुबोध सर, कोई भी सर आपके तरफ से, कोई भी आप आए, कोई भी आए, तो बिल्कुल मेरे तरफ से गाइडेंस के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। अब महीने में 4 दिन निकालना कोई बड़ी बात नहीं। थैंक यू। हम चाहेंगे पवन, निशा, आप लोग खड़े हो जाए, जो पिछले साल जो एमबीए में जो आए हैं।
नमस्ते सर, मेरा नाम पवन कुमार है और मैं पटना जिला के बीटा ब्लॉक के पड़ेव गांव का रहने वाला हूं। पिछले साल मैंने जीविका लाइब्रेरी के माध्यम से ही मुझे पता चला था मैट के बारे में। मेरी मम्मी जीविका में जुड़ी हुई है और मैं भी जीविका में ही एक छोटे से पोस्ट पे काम कर रहा था और जब भी समय मिलता था तो मैं वहाँ पे जो पास में अम्हाड़ा में एक लाइब्रेरी है वहीं पे जाके पढ़ता था और वहीं पे अचानक से मुझे पता चला क्योंकि मेरा सर फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब था पापा वापा का, तो आगे उस तरह का बेहतर एजुकेशन के लिए मतलब बड़े कॉलेज में नहीं जा सकते थे, फीस भी ज़्यादा होती थी। तो जब पता चला कि अगर इसके माध्यम से अगर हम लोग अच्छा करते हैं तो हम लोगों को ट्यूशन फीस माफ़ कर दिया जाएगा। तो मैंने अप्लाई किया मैट का और वहीं पे जाके तैयारी किया। कॉलेज के ही कुछ प्रोफेसर्स थे जैसे प्रोफेसर श्रीधर, उन्होंने हम लोग को गाइड भी किया था, बताया था किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग उसका तैयारी किए और उसके बाद सर मेरा सिलेक्शन हुआ और अभी हम मेरा 2 टर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अच्छा कर रहे हैं हम लोग। बहुत धन्यवाद। एक चीज तो आप सीखे, देखिए सबसे बड़ा बात क्या है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में पहला डिजिटल एजुकेशन से विद्वान कौन बना था, पता है आप लोगों को? वो था एकलव्य। दुनिया का पहला डिस्टेंस एजुकेशन लिया वो, और संसाधन नहीं रहने के बावजूद भी वो केवल विश्वास अपने गुरु में स्थापित किया और सबसे बड़ा जो है सो वो ज्ञानी बन गया। आप केवल विश्वास रखते हैं और तरीका अगर खोज निकालते हैं तो डीएमआई जैसी कई संस्थाएं हैं जो आपके लिए हमेशा तत्पर होता है। इसलिए कुछ लोग समस्या से टूट जाते हैं, कुछ लोग समस्या से निखर जाते हैं। हम सभी लोग आपके साथ हैं, सभी लोग रहेंगे, ये इसका विश्वास दिलाते हैं। थैंक यू सर। एक निवेदन है पवन जी, आपसे एक निवेदन है कि जब आपकी नौकरी हो जाए, है ना, तो जीविका ने आपको जीवन में बहुत कुछ दिया। जब आपकी नौकरी हो जाए कम से कम तो 1-8-1.5 साल के लिए अपनी तनख्वाह का आधा जीविका वालों के पास दे दीजिएगा ताकि वो उससे किसी और का भला हो जाए। इस बात के लिए भी आप सोचिएगा, है ना, क्योंकि जीविका ने आपका मार्गदर्शन किया है। तो ऐसे नहीं कि नौकरी मिल जाए तो आप उसका बस वो आपकी हो गई, उस पर आधा हक थोड़ा बहुत दिन के लिए 1 साल के लिए भी उससे कुछ किताबें खरीद के दे दें, कुछ कर दें, लेकिन लौटाइएगा जरूर, इस बात का ध्यान रखिएगा, फिर शायद वो किसी जरूरतमंद के काम आ जाए, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम एक बात ये कहेंगे कि आप कुछ भी दीजिए, हो सकता है कि उस समय में आपकी जरूरत बहुत हो जाए, तो हो सकता है कि आधा नहीं दे पाए। आप मुट्ठी भर दीजिए लेकिन दीजिए जरूर, ये ध्यान रखिएगा। नहीं, अब मान लीजिए हो सकता है इनका बच्चा हो, परिवार हो, बड़ा हो जाए, आधा नहीं दे पाए, तो देने का आदत डेवलप करिए, क्योंकि जो हम लोग भारत हैं, भारत देने में विश्वास करता है। आप दीजिए, जो ही दीजिए, थोड़ा सा दीजिए और थोड़ा ही बहुत बड़ा हो जाता है। जी, क्या क्वेश्चन है आप लोगों का, पूछा जाए तो? बैठ जाइए। नमस्ते सर, मेरा नाम निशा है। मैं पटना जिला से बीटा ब्लॉक से पड़ेव पंचायत के रहने वाली हूँ। मैं जीविका में ही एमआईएस के पद पे काम करती थी। वहीं से मुझे ये सीएलसीडीसी मैट के बारे में पता चला कि अगर वहाँ से हम लोग मैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो जो 3 बच्चे उसमें क्वालिफाई करते हैं उनको 6 लाख का स्कॉलरशिप मिलेगा। हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था कि हम ये डीएमआई जैसे इंस्टीट्यूशन में आकर पढ़ सकें। तो अपने काम को करते हुए मैंने अपना टाइम निकाला, फिर वहाँ से जाके सीएलसीडीसी में पढ़ाई की तब, और ऑनलाइन के माध्यम से प्रोफेसर श्रीधर सर ने भी हम लोग को गाइड किया और तब जाके मैंने ये मैट का एग्ज़ाम पास किया। थैंक यू सो मच। जस्ट बिकॉज टाइम यहाँ पे बहुत प्रीसियस है सब लोगों का, हम एक चीज सिर्फ कहना चाहेंगे कि देखिए कोई लोग अलग नहीं बोल रहे थे, सब एक दूसरे को कम्प्लीमेंट ही कर रहे थे। पहला आप देखिए तो आपके पास अलग अलग कैरियर अपॉर्चुनिटीज पता चला होगा और ये चीज समझ में आया होगा कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल, हमको सिर्फ क्या करना है, किसको टैप करना है। तो पहला कि ये मत समझिए कि अपॉर्चुनिटी है नहीं, बिकॉज शुरुआत में एक टाइम था कि हर घर में मैक्सिमम ये चीजें आ जाती थी बात कि अपॉर्चुनिटी ही अवेलेबल नहीं, तो क्यों पढ़े, आईए के बाद बीए क्यों करें, या आईएससी के बाद बीएससी क्यों करें, एमए क्यों करें, मास्टर्स के बाद भी तो घर में बैठा रहता है।
बट वो सिनेरियो है नहीं। अगर आप सिर्फ इस चीज को कंटिन्यू रखें तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है आपके पास। सर जैसे स्टार्ट किए थे तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दिखाया कि 36,000 वैकेंसीज सिर्फ जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास है टीचिंग में, प्रोफेसर्स लेवल्स में काइंड ऑफ आई थिंक पूरे बिहार में से 36,000, एक दो नहीं 36,000 में देखें तो उन्होंने अभी बताया था कि नेट के बारे में बताया था, सिमिलर लाइन पे बेट के बारे में बताया था कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट आएगा। तो अगर आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं जो कि मास्टर डिग्री के बाद होता है, ध्यान रखना होगा कि मास्टर डिग्री के बाद ही होता है, तो एटलीस्ट मेरे पास मास्टर डिग्री होगा तब तो हम उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर मास्टर डिग्री नहीं हो पाएगा तो हम एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। तो पहला तुमको उस लेवल तक जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप देखें तो सर ने बताया था क्लैट के बारे में बताया, इन्होंने फिर बताया कैट के बारे में बताया, आईपीएम के बारे में बताया कि अगर आप मैनेजमेंट ओरिएंटेशन में जानना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये बैरियर्स को पहले क्लियर करना पड़ेगा। और इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो ग्रेजुएशन मेरा एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो पहले इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल करें। ग्रेजुएशन करेंगे फिर हम सिविल सर्विसेज कर सकते हैं, बिना ग्रेजुएशन के हम सिविल सर्विसेज भी नहीं कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद हम सोचेंगे, ऐसा नहीं करना होगा। सब लोग हमेशा से यही बोलते हैं कि आपको हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। शशि सर ने बहुत अच्छा कहा कि स्मार्ट वर्क सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन बेस्ट पार्ट है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क शुरू से करते रहेंगे तो सर्टेनली आप बेस्ट कैरियर में जाएंगे। वेदर कैरियर का मतलब कभी भी गवर्नमेंट सर्विसेज सिर्फ नहीं है और प्राइवेट सर्विसेज नहीं है। अगर आप इनमें से जितने लोगों को देखें तो सिर्फ सर के अलावा कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है और ना ही प्राइवेट सर्विसेज है, सब ऑनर है, फाउंडर है, सबका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, अपना स्टार्टअप है काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये सब बेटर कैरियर में सेटल्ड हैं कंपेयर टू एनी गवर्नमेंट सर्विसेज में सेटल्ड हो जाए और प्राइवेट सर्विसेज में सेटल्ड हो जाए। लेकिन इनका कैरियर बेटर क्यों है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। आपको बेस्ट दिख जाएगा कि सर ने 60 रुपीज से मिलियन कमाना शुरू कर दिए, लेकिन इसके ड्यूरेशन में इन्होंने क्या मेहनत किया वो नहीं दिखता है लोगों को। तो वो देखने का सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसमें कि उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में लोगों ने बहुत अच्छे से गाइड किया कि एडमिशन कहाँ लेना है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी तक वो जो टेंडेंसी है कि क्लास जहां ना हो वहां एडमिशन ले, अगर ये टेंडेंसी रहेगा कि क्लास जहां ना हो वहां एडमिशन ले लें तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। तो हमें वो भी पिक करना है कि क्लास तो हो ही। अभी मैक्सिमम लोग आप लोग ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको का एडमिशन होगा किसी कॉलेज में, उस कॉलेज में आप क्लास ही नहीं जाते होंगे, ग्रेजुएशन में आप क्लास जाते ही नहीं है, जो बिहार के मैक्सिमम कॉलेज का टेंडेंसी है। तो अगर आप क्लास ही नहीं जाएंगे तो आपका सीखने का क्षमता ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो बहुत पॉइंटर्स आपको मिला है, आप इस पॉइंटर्स पे सिर्फ ध्यान रखेंगे, सर्टेनली आप बेटर करियर ऑप्शन में जाएंगे। बट हमेशा फोकस रखेंगे कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो कि सब लोगों का अल्टीमेटली ये फोकस एरिया है। आप हार्ड वर्क करते रहें, कैरियर का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा। हम बहुत थैंक यू करना चाहेंगे सर सब आप लोगों का, आप लोगों अपना टाइम दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक पे अपना व्यू पॉइंट रखे। हमको सर्टेन है कि सब लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट हुए होंगे। थैंक यू सो मच सर। Thank you, everyone. We thank all the panelists and the moderator for such an engaging conversation. We now request Professor Purve to present mementos as a token of appreciation to the distinguished guests on the dais.
Thank you, sir. Thank you, everyone, for joining us today. With this, we will be ending this session. Thank you for coming. एक मिनट हम लोग चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पर डीएमआई के सदस्य लोग सर लोग हैं, एक बार हमारे साथ मंच को शेयर करें, क्योंकि हम लोगों के भी मेमोरी में रहेंगे कि हम यहाँ गए थे और ऐसे प्रबुद्ध लोग मेरे साथ थे। सुबोध जी, जी जी, एक छोटी सी कहानी है। जब तक सुबोध सर आ रहे हैं, जब सुबोध सर मेरी संस्था पे आए तो बोले अरे ये तो गौरव है। तो एक सौरभ और गौरव जुड़वा भाई हैं, दोनों मेरे बहुत करीबी रहे हैं, और शायद आप गौरव को जानते भी हो, आप ही की संस्था से। अच्छा, आपका राइट स्टूडेंट है। तो उसका छोटा भाई सौरभ, गौरव पहले मेरे यहाँ ही था, और उसकी एमबीए की पूरी पढ़ाई मैंने ही करवाई है, पूरी फीस मैंने भरी एमबीए की उसकी। लेकिन वो बोला है कि सर आप ज्वाइन कर लिए हैं नौकरी, अब आपका पैसा हम लौटा देंगे। अभी उसका भाई सौरभ था तो सर कंफ्यूज हो गए काउंटर पे, कह रहे ये गौरव है क्या सर? One more announcement, I think. Yes, sir. So tomorrow we'll join again for the session. And today, let's proceed for, after this photo session, we'll proceed for the high tea. Thank you. आप सभी लोग आ जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है अतिथि देवो भव। वैसे अतिथि नहीं है, अब हम लोग जो है सो यहाँ के हो गए हैं। अगर फिर भी अगर औपचारिकता समझते हैं तो हम यही कहेंगे, जो भी लोग डीएमए के हैं यहाँ आ जाएंगे तो हम पहचान जाएंगे और हमेशा के लिए अपने पास रखेंगे संस्था में कि अच्छा यहाँ गए थे। और जहाँ कहीं भी मिलेंगे हम लोग, तो ये शिक्षण संस्थान है, और शिक्षा ही एक ऐसा है जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त व्यक्ति को कर देता है। सा विद्या व विमुक्त, जहाँ बंधन समाप्त हो जाए उसका नाम विद्या है। इसीलिए हम सभी लोग एक मंच पर आ जाएं, हमें अच्छा लगेगा। ये हमारे तरफ से आप लोगों का आग्रह है, हमने आपका आग्रह स्वीकार किया है, आप मेरा आग्रह स्वीकार कर लीजिए। जी, सबको एक